So very good afternoon to everybody, right? Let's quickly start what working capital management, right? So working capital management basically has three or four chapters. पहले basics of working capital management, right? Then working capital management, account receivable and account payable management, working capital what inventory management, and working capital cash and cash receivable management, right? ये चार चीजें वर्किंग कैपिटल में है. दीज आर द फोर चैप्टर्स, करेक्ट. हार्डली आई थिंक इसको रिवाइज करने के लिए विल रिक्वायर 1 आवर और हाफ एन आवर फॉर द रिमेनिंग व्हाट. तो आज मैं क्या करूंगा, वन ऑफ द सेक्शन सी क्वेश्चंस ऑफ योर व्हाट मॉक पेपर वो कंप्लीट कर दूंगा. वन या क्या दोनों हो जाएंगे, राइट. तो आ जाओ जल्दी. प्री मॉक जो है दैट क्वेश्चन, वर्किंग कैपिटल, बेसिक वर्किंग कैपिटल का मेन टेबल में बेसिक रेशियोज होते हैं. आ जाओ जरा. You have your activity ratios, right, or working capital ratio or activity ratio as they call it, or the cash operating cycle for a trader. Cash operating cycle for a trader is very simple: inventory holding period, account receivable period minus the account payable period, right? That is the cash operating cycle for what? A trader. Then comes the cash operating cycle. Generally cash operating cycle is nothing but the shortage of what funds, and how many days is the fund shortage for. Now coming to the formulas of account receivable period and inventory holding period and account payable period. Account receivable period is your average account receivable that is there divided by the credit sales into 365, 52 or 12. Inventory holding would be average inventory held divided by COGS into 365, 52 or 12. Average account payable would be credit purchases or COGS into 365, 52 or 12. Correct. Now your credit purchase if given, use credit purchase. COGS if given, or if credit purchase not given, use COGS. There is one question that was there, right? That was Guillermo, right? Please possible करना तो होगा तो कर लो, करेक्ट, राइट. तो whenever in a question closing account receivable inventory or account payable balance given and average account receivable inventory and payable balance given, first preference give to average का calculation. Use average account payable as first preference, correct. If in a question there was an MCQ that was asked in exam, right, where average account payable receivable and inventory balance was given, and where the other part had what, tell me, closing balances. So I would recommend always to give first preference to what, tell me, average balances. मालूम नहीं आपको मालूम है क्या नहीं, but that is how it is to be. Second preference it is what, to the closing balance. If year by year calculation, so you have to use closing balance only, right? If 2 year balance sheets given, always use closing balance to calculate the activity ratios. So this is how you work it out. Okay. Then you have the वर्किंग कैपिटल रेशियो. उसके बाद है मैन्युफैक्चरर. मैन्युफैक्चरर का कैश ऑपरेटिंग साइकिल इज वेरी सिंपल. रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, WIP, दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री हेल्ड पीरियड, अकाउंट रिसीवेबल पीरियड, अकाउंट पेएबल पीरियड. नाउ कमिंग टू दिस पार्ट ऑफ व्हाट, raw material inventory holding period is raw material held divided by raw material consumed or raw material purchased if opening closing balance not given. Then WIP held would be WIP held divided by total production cost of finished goods or COGS, correct. And finished goods or inventory held would be finished goods what, inventory held divided by COGS. Account receivable will be added and account payable already we have done the balance. The average note in COC of trader applies here. That means average will be given first preference. In some questions 360 days, 50 weeks or something is given, use that instead of 365. Nothing given, use 365 and 52 weeks. So you need to read the question very patiently to understand what is happening, correct. Working capital turnover ratios, right? Account receivable turnover ratio, inventory turnover ratio, correct, and account payable turnover ratios. So these are complementary formulas. You have account receivable balance by credit sales. This is credit sales by account receivable, and the answer is in times. When it says working capital turnover ratio, it will be in times. When it says working capital turnover period, then the same what ratios that we have calculated before will be applicable. Have a look, right? So how much sale you are able to churn out and all that, right? The logics of it you can read some or the other where I have given all the logics that can be given in the world, correct. Just a second. Huh?
Chal. So working capital turnover. There are questions that are asked. Working capital turnover will be given, correct? And they will ask you what? Tell me. There is a question here. Turnover ratio given. Inventory holding period will be given. Account payable turnover ratio will be given, right? Like this question will be given, and they will ask you what is cash operating cycle. I hope you have done these kind of questions. किया है क्या? किया है ऐसे question? Have you seen these kind of questions? Have come up in exam before also? Or straightforward? वैसे straightforward नहीं है because it is not simple to remember and what keep in mind. But ऐसे question आए हुए exam में. You should give it a try if you have not yet given it a try. Sales by net working capital. So net working capital is the amount you invest today in the working capital, right? So it will be account receivable plus inventory minus account payable. Remember, your cash and all that will not come in net working capital, correct? Right? Then sales divided by net working capital is basically answer is in times. So the implication is basically by investing how much amount, how much sale we can. So investing 225,000, like in this question, if you are getting a sale of 1 million, right? That means 4.4 times. So if you invest $1 in working capital, you can churn $4.4 worth of sale, correct? Have a look, right? Yes, sales by net working capital. There was advanced question how to do that question. You can have a look. If there is a reduction in capital, increase in capital, all that is there. Liquidity ratio, may you have current ratio and quick ratio. I am telling you, these are hidden questions that are asked. Sales by net working capital, thoda sa, calculating working capital, net working capital, and then calculating ratios, uska, all that, right? Or turnover ratio, say, telling you to find out cash operating cycle, telling you to find out how much is invested in net working capital. All that are questions which have been asked repeatedly in exam. So don't what? Ignore them. ठीक है? Liquidity ratio, current ratio, quick ratio, current ratio and what? Quick ratio or acid test ratio. Current ratio क्या है? Current asset by current liability. Current assets have to be. Now when I take current asset here, I will include what? Inventory, cash, account receivable. And current liability will have account payable and OD. Remember, very important. उधर क्या था? In net working capital अलग फॉर्मूला है, इधर करंट एसेट का अलग फॉर्मूला है. So there are chances that in one question both the things are asked, and you will get, if you don't know the small difference, you will be at a very big loss. Direct answer may 0 because there is no chance, correct? Current asset is what? Inventory plus cash plus account receivable. Just a second. Right? So current ratio denotes what? How much liquidity or what is the liquidity position of the company? Whether company can cover its current assets or current liabilities fully by selling the current assets. Generally in times the ratio will be there. More than 1 denotes that there is good liquidity position, but very high also not very good. Quick ratio, and also yeah, it might be more than 1, but from industry to industry it will change. Quick ratio is nothing but the current asset minus the inventory that is there. Quick ratio or acid test ratio, right? Current asset minus inventory divided by current liabilities, correct? Have a look. Quick ratio denotes how fast can the current assets be converted. Quick means how quickly can it be converted, correct? Then we have what? Account receivable. If you keep it high, there might be account receivable. If you keep it high, that means you are giving very high credit period. That means there will be liquidity problem. That means maybe the profitability may go up, but the liquidity will suffer because you are giving more credit period. You will have to bring money from outside and fund your business, correct? From what? Tell me. Various sources and fund your business, and it will lead to high interest cost, correct? And maybe liquidity problems will arise, correct? If you keep it very low, that means you are giving very low credit period. You might have low sales, low profit. Low profit might be a problem, correct? So whenever either account receivable, account payable, cash, inventory, you don't want too high, you don't want too low, you want balance. और ये balance के ऊपर theory question have come up, correct? That what if account receivable kept high, what if account receivable kept low, what if inventory, if you have very high inventory, that means you have a lot invested in the inventory balance and people are not buying your inventory, correct or not? उस case में what you have to do? Tell me. There is a problem. If lot of people are not buying your inventory, correct or not?
then there is an issue, right? So very high investment, high money or high OD will be required, or high investment will be required, high interest cost and low profits, correct? But what is the good thing? If there is a one special order that comes up, then it will be good for you because you can supply that one order, right? Cash, if you have very high, then or inventory low hoga, so then you lose that kind of order. But less investment, what in what, and the profits will comparatively be higher because interest cost will be lower. Then cash or cash receivables, high and low. If you keep cash is very high, then you are losing the opportunity of investing the cash somewhere else, right? And that is the problem, right? You are losing out on interest or return on the investment that you will do with the cash, correct, enough, right? Cash is, if it is low, correct, then advantage क्या है? It, you can invest somewhere and get interest on it, right? And disadvantage is basically if someone comes, or advantage cash का है क्या है? If you keep cash with you and someone gives you a discount, cash discount, you can avail that cash discount. But if it is low, then you cannot not avail cash discount at all. Then account payable, if you keep very high, that means you are not paying your account payable on time. You will lose goodwill. People will not give you credit if you stretch people for a very long period. What disadvantage है? Advantage क्या है? Probably you get more money to keep for more days, right? You don't have to borrow from outside to pay to people, right? Low कर रखेंगे तो it is what you are paying off, so interest ज़्यादा लगेगा. You will have to bring money from outside to pay people, correct? वैसा है. OD if you keep very high, maybe the bank might not be very happy, correct? And you might be able to churn out more sales with higher OD, correct? But interest भी बहुत high होगा. Low OD है या very low OD, then lower interest, better profits, correct? But that means you might not be able to churn out a lot of sales, correct? So wherever they ask in working capital whether you should prefer profitability or whether you should prefer liquidity, your answer should not be profitability or liquidity. Your answer will be what? बोलो. Your answer will be what? Proper. क्या होगा आपका आंसर? Your answer should be balance. What do we need? Balance. उसके अलावा कुछ और चाहिए? नहीं. Working capital investment strategy, correct? आ जाओ. This is one of the most important LDR question. 100 ने 200% feeling that this question appears in exam. आनाच मांगता. बराबर है क्या? देख लो, आता ही. और I have seen a lot of time this question being repeated. Working capital investment strategy. How much amount? See, whenever I say how much amount is to be invested in working capital, whether I should invest very high amount or very low amount, correct? I am talking about investment strategy. But when I say from where will I finance my working capital investment strategy, right? उस केस में I have to talk about what? Tell me. Working capital funding strategies. Whenever quantum of investment, how much I should invest? 1 crore or 10 crore? 1 million, 10 million, right? Working capital investment, right? If you are conservative kind of person, correct? That boss, we will not take a lot of risks and will be a bit less risky. You will invest high amount of money is invested in the working capital. It is called as conservative working capital investment strategy, correct? Where account receivable will be high, inventory will be high, cash will be high, accounts payable will be comparatively lower. You will give more credit period, you will have more inventory, you will hold more cash, but account payable, right, you will pay on time so that there is no tension. More amount invested in AR, inventory and cash. AR period is more, inventory holding period is more, accounts payable period is lower, cash operating cycle will be higher. Current ratio and quick ratio will also be higher. More liquidity is available, but high investment, high borrowing. So interest cost will be high, profit will be low. Gearing generally, because you are going to borrow, generally इसमें ऐसा होता है, you are going to borrow long term, so gearing will be higher, correct? Because you are going to invest a lot of money, you will have to borrow, and generally you will borrow long term, right? Sales by net working capital will always what? Sales by net working capital will always be lower, correct? Because your working capital will always be higher, correct? Over capitalization, that is there, right? It is a situation which is called as over capitalization or over investment in working capital, correct? Then there is aggressive working capital strategy, which says what? Sir,
I am not going to invest too much in working capital. I am going to take the risk, and with low amount of working capital, I am going to get a lot of sales. Correct? Here, you are going to have a substantial working capital in conservative. In aggressive, you are going to have very low working capital. Correct? So when a low amount of money is invested in working capital, it is called as an aggressive working capital investment strategy. Account receivable will be lower. Correct? Inventory will be lower. Cash will be lower. Account payable might be higher or may remain same. Less amount of investment in account receivable, inventory, etc. AR period will be lower. Inventory holding, cash operating cycle will also be lower. Right? Current ratio or liquidity will also be less because you have not invested a lot of money into your current assets. Correct? Liquidity is less, low investment, but because of low investment, low borrowing, low interest cost, lower profits, or profits will be higher. Low interest cost, so profits will be higher. Gearing may remain unchanged because you are not going to borrow too much. Correct? Sales by net working capital will go up. That is there because you want to earn or churn out more what sales, and it is called as a under capitalization and under investment. If this is not taken care of, this under capitalization can lead to over trading that is there. Right? Working capital financing strategy. Right? Just a second. Let me do over trading नहीं, but over trading के पहले working capital financing. आ जाओ. Working capital financing strategy. Working capital financing strategy. Are you okay with me taking financing? या थोड़ा बीच में एक दो कुछ लेके I should take financing. आ जाओ. Over trading ले लेता हूँ. आ जाओ. It is a situation, over trading or under capitalization, in a situation where you want high sales with low or under capitalization. You want what? You want working capital to be very low invested, but you want too much sales, right? So someone says ऐसा करना है, right? In that case, you will do what? If you are giving 30-day credit period, you will give एकदम से 60-70 days credit period. The whole market, everyone wants to buy from you because you are giving very good credit. So what will happen? Your sales will increase rapidly, correct? But as you are funding your current assets from a lot of OD or short term what investment, it may lead to very high interest cost, right? And you may have lower gross profit and lower net profit. Correct? Your account receivable will go up, inventory will go up, account payable may go down or may remain same, cash operating cycle will go up. So over trading or under capitalization, if you are doing first two conditions, if it is fulfilled, right, you have to write. So a question comes up. I'll give you a question also. Rapid fall in liquidity. Correct? Rapid fall in liquidity means what? Your current ratio will fall, quick ratio will fall. But there has to be a rapid fall. Rapid rise in sale cannot be 2-5%. Has to be 10%, 20%. Substantially more than 10%. A rapid fall in liquidity cannot be 2-5%. Have to be minimum 10% to 15% for it to be a rapid fall or rapid rise. And you have to see that how you have funded the increased sales or current assets. If you have increased sales or current assets all by short-term sources or overdraft, then in that case, what you are basically what over trading, and it is a problem that will or it will release or lead to a lot of problems, right? So you should write that there is a in on the verge of, or you should write that the company is on the verge of over trading and management should take care of the same. अब मेरा ये मानना है, this question has been removed from the current, those who have the old क्या कैप्लन बुक, उसमें ये क्वेश्चन था, ओल्ड में था, बट इन द न्यू कैप्लन बुक ये क्वेश्चन निकल गए, राइट? लुकिंग एट व्हाट दिस इज, मेरा ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है that somewhere over trading, either a short note on over trading, ये 4 पॉइंट लिखना, करेक्ट, और a full fledged question of गोरवा कंपनी on over trading can come up in exam. ये मेरा खुद का क्या है एक्सपीरियंस बोल रहा है, राइट? that something that has been removed from some of the books लपड़ा होने वाला है, that is what, क्योंकि ये निकाल दिया क्वेश्चन, उन्होंने निकाल दिया. सो आई फील दैट ये क्वेश्चन आएगा. बाकी आपको अगर करके जाना है करके जाओ. गोरवा कंपनी ओल्ड बुक में नहीं है तो मेरे न्यू इधर मैंने पेस्ट किया, आपके पास ये नोट्स है, प्लस मेरे एक्सेल में ये पूरा सॉल्व है, ठीक है? तो यू कैन हैव अ लुक हाउ टू सॉल्व इट. यू हैव टू चेक ईच कंडीशन, हर एक कंडीशन पे मैं लिखते गया. अगर चारों कंडीशन फुलफिल हुई तो ही ओवर ट्रेडिंग, 3 हुई 1 नहीं हुई, जैसे गोरवा में 3 होती है 1 नहीं होती है, in that case you will say that company is on the verge of over trading, correct? And please mark management should take care, right? ऐसा.
working capital funding strategies. So you need to fund your non-current asset and current asset, correct? Non-current asset are generally assets which have life more than 12 months. Example, fixed asset, generally funded by long-term loans, correct? Right? And then current assets. Current assets are generally less than 12-month period that are there. Your account receivable, cash, inventory. Non-current assets are generally your fixed assets, right? But when it comes to current assets, there are two types of current assets: permanent current assets and fluctuating current assets, right? Permanent current assets are current assets which are present in the business all the time. That is example, minimum cash balance, buffer cash, buffer inventory, minimum inventory, safety stock, जो बोलना है, right? These are generally always present in the business, correct? And fluctuating current assets which change, go on changing. Current asset हो गया, cash हो गया, all that stuff, correct? Basic cash, buffer cash अलग, inventory changes every day, but buffer inventory क्या होगा? Never you will have any other investment other than, or that investment will be permanent in the business, correct? And fluctuating are other balances. Now hear me out. Logically, non-current assets are funded, are long-term, so have to be funded by long-term source of finance. Current assets generally are funded by short-term, but in that also permanent current assets are permanent. So should we fund them by long-term or short-term is a question. But fluctuating current assets are very simple and straightforward. They are fluctuating, daily changing, they have to be funded by short term. But permanent current asset, क्या बोल रहा हूं मैं? Permanent current asset, right? If, right, they are funded, correct, they have to be funded by what? Tell me, either short term or long term. Whether you take short term or whether you take long term decides what kind of financing strategy you are following. Have a look. If you are following a conservative working capital financing strategy, right? Conservative working capital financing strategy. In that case, non-current asset to long term, for your fluctuating current asset to short term, but your permanent current assets will be funded by long term sources. Generally, it is a less risky what strategy, but the cost, because you're taking more of long term, so basic logic is long term is much more costlier than short term finance. So if you're taking more long term, interest will be higher on the long term finance, profit will be lower, gearing will be higher because you are taking long term source of finance, and there is over capitalization that will happen. ठीक है, कोई बात नहीं, over capitalization that will happen. Then there is aggressive working capital which says non-current asset long term, fluctuating asset short term, but permanent current asset by short term source. Or sir, you are keeping permanent short term because we are ready to take risk, so that interest is low, profit is more, gearing is less, and it is a risky strategy. बराबर है. Then balanced or what? Matching working capital financing strategy, which says don't think so much non-current, current. Go to every asset, knock the door, ask how many years? 5 years. Okay, chalo, 5 year loan. 4 years, 4 year loan. Every day changing loan. Overdraft. Go take it. Right? Match the asset life with the life of the finance. Simple and sweet. It is called as a balanced approach. Have a look. Working capital financing. I cannot even begin to tell you इसका कितना इंपॉर्टेंस है. दिस क्वेश्चन इफ इट कम्स अप, सीधा 6 मार्क गिफ्ट है तुमको, गिफ्ट है 6 मार्क का गिफ्ट. इफ दिस क्वेश्चन कम्स अप, 6 मार्कर गिफ्ट. ठीक है, चलो. देन अकाउंट रिसीवेबल, वर्किंग कैपिटल, अकाउंट रिसीवेबल एंड अकाउंट पेएबल. हैव अ लुक. राइट, बेसिक्स ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, अकाउंट रिसीवेबल एंड अकाउंट पेएबल, कंपोनेंट्स ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, पॉलिसी, theory that is there, right? Then you have account receivable, discount, factoring है, account payable है, foreign account receivable है. चलो आ जाओ. Objectives of account receivable management. क्या है account receivable management के objective? आपके to improve your cash flows, to improve your customer satisfaction, you should reduce the bad debts, right? If you take care of your account receivable, bad debts will be very less. Boost the sales in company. If you do all this correctly, your sales will be increased. Components of an account receivable management policies. There are various. ये questions भी theory के लिए बहुत important है. Has been asked too many times. Okay. Have a look. Account receivable policy formulation. New customer zero credit. यानी policy formulation में what will happen? You look at the account receivable or the customer and decide. If it's a new customer, don't give him credit. If he's a older customer, 6-7 months, he's now dealing with us,
give him 30 days. If he's a very old customer, 1 year, 2 year now done, or 5 year done, give him 60 days credit, right? But take care that you monitor all these what account receivable so that they pay on time and you have what prompt things available with you. Assessing credit worthiness of new customer is one of the component of account receivable management. How do you do that? How do you assess credit worthiness, right? You look at published financial statements of the account receivable of the customer. You have a very big listed company as your customer. Always check their financial statement, whether they are in profit, whether they are in loss, whether they are having liquidity problem. ऐसा कुछ है क्या? Look at the past track record. Are they paying everything on time or are they not paying everything on time? There's a credit report or civil report that is there. You can get it online, correct? Look at the credit report or the civil report. Have they paid everyone on time? Look at the sales history or record, right? And ask your competitors, right, that whether this person is paying on time or not paying on time. Prompt invoicing and follow up. Prompt invoicing and follow up का मतलब क्या होता है, right? This is one of the component where you have to what do the invoicing promptly. जैसे ही you have left or the goods leave your premises, तुरंत invoice भेज देने का. Follow up करना, right? Calls, follow up, right? Letter and emails writing, right? You have to ask for your money. Once if everything is exhausted, correct? Send a legal notice. If legal notice does not work, you are factoring another option, Munna bhai, correct or not, right? And then aging analysis. Every 15-20 days, 1 month, you have to do aging analysis, that how fast are your account receivable paying you, correct? Then account receivable, you give discount, right? So discount given to account receivable, right? Account receivable discount given to customers, right? 100% of the customer take up the discount. There is a formula method that is there, that you give discount to all the customers and everyone takes up the what discount. In that case, you find the annual cost of discount or you could say what basically your annual cost of discount you will calculate, right? Have a look. And then you have if only a percentage of customer take up the discount, right? Where the new versus existing system works out. So first, do you also know how to calculate account receivable? Yes, you have to also understand how to calculate account receivable. So let's say if I give you sales and I say 3 different types of account receivable are there, find out the account receivable of all the 3 that are there. So you can find the account receivable, right? And then if I give you finance cost, then you can calculate the finance cost as well, right? Existing system, payable discount, 100% customer take up the discount. In that case, there is a formula. Here also there is a catch. Okay, there are 2 types of formulas. One is simple interest method ka formula. Simple interest method formula is very simple. Your discount. So if here in this case, sales will not be given in the question, sales will not be given, nothing will be given, right? And you will be told to calculate annual rate of discount. Annual rate of discount khali bola, so simple interest. But if they say based on compounding interest method or what is the annual effective rate of discount, then you use compounding. So what if we do what simple interest, how do we calculate discount that you have given? So there you find the true discount. What do you mean by true discount? So no, $100 is the value of the sales. I give you 2% discount, right? For generally you pay within 3 months. I give you discount if you pay within 1 month, correct? So sir, $2 ka discount on a $100 invoice. So how much do you end up paying? 98. And $2 you get discount. So suno, the true discount is $2 divided by 98. That is somewhere more than what? Tell me. 2.04%. 2.04% because you are paying 2 months early. So what is the annual rate of discount? So it would be what 2.04 into divided by 2, right? So per month whatever the rate into 12.24%. But if it is same on compounding method, right? Compounded every 2 months, correct? Then it will be 1 plus the discounting or true discount rate, that is 2 by 98. 1 plus 2 by 98 raised to 6 times it will grow, correct? That is 12 by 2 minus 1. But they have to use the word what? Effective rate of interest. Yani question, if you go in the exam,
and they ask you calculate the annual rate of discount only. Default method is this simple interest. 2.04% for 2 months divided by 2 into 12. This is simple interest. But sir, what about compound interest? So there you will add 1 plus 2.04% raised to 12 by 2, not multiply by 12 by 2, raised to 12 by 2 minus 1 gives you 0.128. Discount by invoice value 125, 52 or 365, but generally it is 12 divided by, or 12 divided by what? Time saved. Here it is n is time saved logically. Correct? Have a look. Is time saved is what? Account receivable days minus early payment days due to discount. याद रखो, this is one of the simplest formula to forget. Simplest formula to forget. Correct? ऐसा है boss. Right? Have a look. Makes sense? Does not make sense. 100% customers accept the discount. Correct? This is how it is. Simple interest, compound interest. Okay. Did you do this so much in detail? Bolo. Yeah. Because Kaplan only has what? Tell me. Compound interest. Simple interest अभी study up पे है. Simple interest में study hub has used this approach. I don't know whether you know it or not. ठीक है. Then what you will do? Tell me. You will decide. Also the question is such that boss, you have a short-term financing cost and you find a annual cost of discount. Whichever is lower, you choose that option. So question gives you all discount ka detail. That if account receivable discount is to be given 2%, right? And if you pay 2 months early, correct? And short-term financing cost is 10%. Tell us whether to do discounting or to fund your account receivable via short-term finance and not give any discount. So short-term finance cost versus the annual cost of discount by whatever method, correct? And whichever is lower will be chosen, correct? Then if all customer do not take up, only certain percentage of customer take the discount. So in that case, you have to do what? Existing system and new system. Finance cost of accounts receivable, bad debts or other costs, correct? And new system में you get discount cost, finance cost of account receivable, bad debt cost if there is any that is left, other cost or savings that are there, and profit earned due to increased sales. Fleet company question. If there is any profit or contribution increase due to sales, that will also be added here, right? देख लो बाबा. Have you done this old versus or existing versus new system? बोलो. People who are not Yes, with sir. us. Yes, done. अरे आशीष तुमने किया है रे. Not you. Everybody else done. Existing versus new system. देखे आपने क्वेश्चन? एक आधा दिखाओगे आपको? हमने आई थिंक 2-3 क्वेश्चन किए ना रे. फ्लीट कंपनी किया और एक किया ना रे. आशीष कौन सा किया रे अपन ने? तो अपना एक मिनट बच्चा चेक करता हूँ। सारे सेक्शन ही क्वेश्चन करके गया ना. अपना कितने 30 एक क्वेश्चन तो किए अपन ने सॉल्व ना. ये रहा ना, मैं निकला ना. गोरवा. हाँ, के एक्स पी ये रहा ना, के एक्स पी. हाँ, ये रहा देखो. के एक्स पी भी है और फ्लीट कंपनी भी है. फ्लीट कंपनी आपने सच में करना चाहिए क्वेश्चन. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है फ्लीट कंपनी. के एक्स पी कंपनी, फ्लीट कंपनी तो 100% करना चाहिए. मतलब नहीं किया है तो तुमको मैं रेकमेंड करूंगा कि करके जाओ. गोरवा कंपनी नहीं किया होगा तो करके जाओ प्लीज. गोरवा कंपनी तो पुराने बुक में है. इन द न्यू बुक इट इज नॉट देयर. नहीं किया है अभी भी चांस है. ओवर ट्रेडिंग पढ़ो और आधे घंटे में गोरवा कंपनी हो सकता है. कोई टेंशन नहीं है. के एक्स पी और फ्लीट कंपनी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. राइट. राइट. अकाउंट्स कैसे, रिसीवेबल कैसा और पेएबल कैसा. देखो यहाँ 60 डेज ओल्ड अकाउंट रिसीवेबल डेज पे यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट निकलेगा और यहाँ पे 30 डेज में निकलेगा और ओनली ऑन द 50%. करेक्ट. जस्ट अ सेकेंड.
तो आ जाओ, इन दिस व्हाट यू हैव टू डू, डिस्काउंट कॉस्ट, कितने लोगों ने डिस्काउंट लिया, कितने लोगों ने न्यू क्रेडिट पीरियड यूज किया, कितने लोगों ने ओल्ड अकाउंट रिसीवेबल किया। तो फाइनेंस कॉस्ट के 3 पार्ट बनेंगे, राइट। इफ यू वांट यू कैन यूज द टेबल अप्रोच, आई हैव यूज्ड द टेबल अप्रोच हियर, ऐसा टेबल अप्रोच भी यूज कर सकते हो, बट मैं रेकमेंड करूंगा इवेंचुअली एक्सेल में ही आना है, करेक्ट। And either the question could be find what total cost of both the systems or find the net cost of moving from existing to new system. फ्लीट कंपनी भी वैसा है, फ्लीट कंपनी में इट मे सो हैपन बाय इंट्रोड्यूसिंग डिस्काउंट सेल्स बढ़ जाएगा, तो सेल्स अमाउंट यू कैन नॉट टेक, बट इंक्रीज इन प्रॉफिट और सेविंग्स, राइट, दैट यू विल टेक। इसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अंडरस्टैंडिंग if you are writing costs everywhere, there is a savings here. If there is a saving, you need to write this in negative, correct, ध्यान रखना, ठीक है। तो हैव अ लुक, नोट क्या है इस पे, डिस्काउंट हमेशा किस पे कैलकुलेट होगा, सेल्स इनटू परसेंटेज ऑफ अकाउंट रिसीवेबल ऑप्टिंग फॉर डिस्काउंट इनटू द डिस्काउंट परसेंटेज। ड्यू टू द डिस्काउंट गिवन देयर माइट बी एन इंक्रीज इन सेल्स एंड इंक्रीज इन प्रॉफिट ड्यू टू द सेम। वो सारा क्वेश्चन में दिया होता है, फ्लिट कंपनी क्वेश्चन है, आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो आप एक बार ट्राई करके देखो आज फ्लिट कंपनी, मेरा रिकमेंडेशन लिखा के तो दूंगा मैं, ठीक है। ये हो गया फैक्टरिंग। उसके बाद फैक्टरिंग, फैक्टरिंग में क्या होता है, देयर आर टू वेज इन विच कंपनी गेट देयर मनी इन द अकाउंट रिसीवेबल एनवायरमेंट। पहला तो बिल डिस्काउंटिंग करते हैं, क्या करते हैं, बिल डिस्काउंटिंग। व्हाट इज बिल डिस्काउंटिंग, सिंपली आपने कोई सेल किया, आप बैंक के पास या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास गए, ये सेल का इनवॉइस बताया आपने कि देखो ये सेल का इनवॉइस है, करेक्ट, आई वांट मनी अगेंस्ट दिस इनवॉइस, राइट, यू नो कंपनी बी विथ whom आई एम बिन डीलिंग, तो प्लीज मेरा इनवॉइस डिस्काउंट करो, गिव मी 70-80% ऑफ द डिस्काउंट एडवांस में, राइट, व्हेन मिस्टर बी पेज आई विल पे यू द amount with interest. Obviously interest will be charged by bank or financial institution. But problem क्या होता है, if company B does not pay, right, still company A would have to pay after 72 or whatever 60 days का पीरियड के बाद कंपनी A will have to pay, नहीं तो it will have to pay interest and penalty interest। उससे अच्छा go to factoring, factoring will not invoice or what basically discount your invoices or what, bill discounting नहीं होगा, factoring will directly buy company B's receivable from you। Now once you sell the company or account receivable of company B to the factor, factor will go to company B and say, boss, company has sold all the account receivable to me, now you have to pay me, right? And factoring or factor can give you advance or cannot give you advance, right? But factor will make sure that all your credit period is taken care of, right, that everybody pays on time, right? And even in factoring you have one or two options, what, the factor, if company B does not pay, factor will pay you, that is what, non-recourse factoring। And recourse factoring means what, the bad debt will be the responsibility of company A, राइट। इवन फैक्टरिंग में 4 तरीके, इधर देखो टाइप्स ऑफ फैक्टर लिखा होगा मैंने, हाँ, फैक्टरिंग इज यूज जनरली कौन यूज करता है, कंपनीज विच आर व्हाट फ्रॉम नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड और प्रमोटर्स आर फ्रॉम नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड, दे डोंट नो हाउ द बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स आउट, करेक्ट, and hence they do what, tell me, basically they use factoring so that account receivable management का पूरा function can be outsourced to a factor, right? And generally there are two classifications, and in each classification there are two types, right, based on bad debt responsibility, recourse factoring and non-recourse। recourse means that factor doesn't take the liability of the bad debt liability is with the company, so factor fee generally lower होगा। non-recourse factoring मतलब क्या, factor takes liability of bad debt, no bad debt liability with company, that is main company A, factor fee will be higher, right? Then factor plus advance given or factoring plus advance, factor will say that I will repay or you will get your money in 30 days, he will charge some fees, correct, but he will also give you advance, but if he gives you advance, then he will give you advance at a higher rate than the bank borrowing rate or the short term finance rate of bank only। factoring and no advance, he can say I will not give you advance but I will give you your money within 30 days, right? 4 possible types, any 4 types can be asked, right? What are the relevant cash flows or cost in factoring, your factor fees, savings in admin cost, finance cost of account receivable for how many days the factor has promised to give the money back in, finance cost of advance received from factor if there is any for the account receivable period that factor has promised, bad debt and other costs or savings if there are any। have a look now, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई थिंक आपके इसमें एक ही क्वेश्चन, एक या दो ही क्वेश्चन है, वन क्वेश्चन इज योर ऑस्कर कंपनी क्वेश्चन।
Now, how many of you have solved Oscar company from Kaplan book? Very difficult to remember and understand. Very difficult to remember and to understand, right? फैक्टर का क्या? टेल मी. बेसिकली एक सेकंड ना. ठीक है, देख लो. ओके, मेरा तो मानना है आज ऑस्कर कंपनी, फ्लीट कंपनी, केएक्सपी, गोरवा, राइट, वो सारा मैं आपको बता दूंगा, वो सारा कर देना. ठीक है, चलो. आई गिव यू एट द एंड व्हाट क्वेश्चंस आर टू बी सॉल्व. उसके बाद आगे चलो, आगे चलो. फैक्टरिंग थियोरी वेरी इंपॉर्टेंट. एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. ये थियोरी अगर आपको एग्जाम में दिख गई, डोंट बी सरप्राइज्ड. बहुत बार आई हुई है, आगे भी आ सकती है. सेक्शन सी में थियोरी क्वेश्चन ऑफ फैक्टरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. करेक्ट. एडवांटेजेस क्या है? फैक्टर प्रोवाइड एडवांसेस एट हायर परसेंटेज देन बैंक ओडी. करेक्ट. दैट इज 80% ऑफ फैक्टर, 50% फॉर व्हाट? बैंक ओडी. करेक्ट. देख लो, राइट. वो फैक्टर जब एडवांस देता है बहुत हायर रेट पे देता है. फैक्टरिंग हेल्प्स सेव एडमिन कॉस्ट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल. ऑब्वियसली आपको एडमिन डिपार्टमेंट निकाल देना पड़ेगा, पूरा अकाउंट रिसीवेबल डिपार्टमेंट फायर कर दो और फैक्टरिंग को दे दो. करेक्ट. बेटर असेसमेंट ऑफ क्रेडिट वर्दीनेस. फैक्टरिंग हैज बीन इन व्हाट दिस फील्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, इसलिए उनको क्रेडिट वर्दीनेस का असेसमेंट ज्यादा अच्छे से आता है. फैक्टर प्रोवाइड इंश्योरेंस अगेंस्ट इरिकवरेबल डेट, राइट. अगर इफ यू टेक अ नॉन व्हाट non-recourse factoring, factor charges high interest cost in comparison to bank OD rate. Obviously that is one of the disadvantage. Factor will intervene, it will tell you who to give, how much credit, which customer to deal with. Correct. Customer may not be very comfortable dealing with the factor. Factor may take extreme action against customer, direct fighting. Correct. Without the consent to get the money. And factor employed may mean that company is having cash flow problem. This will be market feeling and thus customer or supplier will not trust company. Correct. अकाउंट पेबल मैनेजमेंट सेम चीज है, कॉपी पेस्ट, सेम फॉर्मूला. इनवॉइस वैल्यू नॉट गिवन, इनवॉइस वैल्यू गिवन, एग्जिस्टिंग वर्सेस न्यू सिस्टम. करेक्ट. उसमें नेसुड कंपनी बोल के एक क्वेश्चन है, यू कैन हैव अ लुक एट दैट क्वेश्चन. ठीक है क्या? एक बार आराम से ये क्वेश्चन देख सकते हो. फिर अकाउंट पेबल मैनेजमेंट, डिस्काउंट, ठीक है, सेम है. कट कॉपी पेस्ट सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है. ठीक है. ठीक है. हाँ, लास्ट इधर डिस्काउंटेड पे बैक, हैव अ लुक. यही है, कैश फ्लो है उसको डिस्काउंट करके फिर पे बैक निकालते हैं, सेम लाइक यू डिड फॉर नॉर्मल पे बैक पीरियड. ठीक है. इन्वेंट्री मैनेजमेंट में आ जाओ, बेसिक इन्वेंट्री मैनेजमेंट आ जाओ. राइट. उसमें सबसे पहले है टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट. राइट. टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट में थ्री कंपोनेंट्स है. व्हाट आर द थ्री कंपोनेंट्स दैट आर दैट? annual purchase price, annual ordering cost, annual holding cost. Annual purchase price, the formula is annual demand into purchase price per unit. Annual demand कैसे कैलकुलेट करना है? समटाइम्स क्वार्टरली डिमांड, मंथली डिमांड इज गिवन. क्वार्टरली डिमांड होगा तो इंटू 4 कर देना, मंथली डिमांड होगा तो इंटू 12 कर देना. करेक्ट. दैट इज हाउ इट इज. एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंटू कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग पर ऑर्डर. इफ यू डोंट नो द नंबर ऑफ ऑर्डर्स, then it will be annual demand divided by reorder quantity. Correct. Into COPO, and cost of ordering per order will have admin cost, transport cost, loading and unloading cost. Everything will be included in the annual ordering cost. Correct. Right. But rather COPO, cost of ordering per order, it will give you how much admin cost per order will be there, transport cost per order, loading and unloading cost per order. Then annual holding cost. Annual holding cost will have average inventory held. Average inventory held is nothing but ROQ plus 0 divided by 2 into cost of holding per unit per annum. You have in the cost of holding per unit per annum storage cost and short term finance on finance of inventory per unit per annum. Correct. These are the inventory management cost, and this is a total inventory cost to manage the inventory, ordering and holding, and total में purchase price. बराबर है क्या? Then you have economic order quantity. What is economic order quantity? Have a look. EOQ. EOQ is that reorder quantity at which the annual ordering cost and annual holding cost will be minimized. Right. Have a look. देन EOQ. हाँ, EOQ में हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट थियोरी क्वेश्चंस आजकल आने लगा है. अजम्पशन ऑफ EOQ सेक्शन ए में थियोरी क्वेश्चन में दिस इज अ व्हाट वेरी गुड क्वेश्चन. डिमांड इज कांस्टेंट एंड नोन.
Demand is what? Constant and known. Lead time is known and constant. Purchase price has to be constant. No buffer inventory, right? Lead time zero नहीं होता है. Lead time is known and constant है. बराबर है. No buffer inventory, assumption of EOQ, right? And annual holding cost is equal to annual ordering cost at EOQ. फिर सेक्शन, हाँ, EOQ में एक तरह का क्वेश्चन बहुत फेमस है. दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन where they will give you COPO on admin cost, transport and loading and unloading cost, वो देंगे आपको. COPO का टोटल निकालना है. फिर वेयर हाउस कॉस्ट इज $1 पर यूनिट ऑफ इंटरेस्ट कॉस्ट इज 7%. तो वो क्या करेंगे आप, इंटरेस्ट कॉस्ट कैसा निकालेंगे, योर एनुअल डिमांड जो होगा इंटू, और योर एनुअल परचेस प्राइस इंटू द परसेंटेज, या एनुअल परचेस प्राइस पर यूनिट इंटू इंटरेस्ट कॉस्ट पर एनम. तो आपको पर यूनिट पर एनम का क्या मिल जाएगा, cost of holding. This is for section A B style question, okay. But when it comes in section C type question, correct? ये देखो annual holding cost. Section C type के question में when you have to do EOQ, तो आप interest cost annual holding cost में add नहीं कर सकते. You will have to show it differently. That is what the logic of all the discussion is. डस्टी कंपनी देख लो, और ये वाले एक दो क्वेश्चन, 1 or 2 questions are there in the Kaplan book also, which add finance cost into annual holding cost in section A and B when annual holding cost is to be, or EOQ is to be calculated. But when you are calculating EOQ for a section C question, interest cost को आप अलग से रखोगे. करेक्ट. EOQ versus bulk discount, right? EOQ versus what? Bulk discount. What is EOQ versus bulk discount? Bulk, see, no other method can beat EOQ. EOQ gives, or the reorder quantity, or the reorder quantity where the annual holding cost and annual ordering costs are minimized. इससे ज्यादा minimum हो ही नहीं सकता. Correct. But if you get a bulk discount, it is a assumption that purchase price is what? Same. But if purchase price changes, क्या होगा? परचेस प्राइस अगर चेंज हो गया तो लफड़ा ही लफड़ा, टेंशन ही टेंशन. बराबर है. विद द अजम्पशन ऑफ ईओक्यू ऑफ परचेस प्राइस बीइंग कांस्टेंट इज नॉट फॉलोड एंड यू नेगोशिएट विद द सप्लायर. बट क्या होगा उस केस में, आरओक्यू विल इंक्रीज. रीऑर्डर क्वांटिटी इफ यू आर ऑर्डरिंग 20-30,000, तो आपको एकदम 1 लाख ऑर्डर करना पड़ेगा टू अवेल अ डिस्काउंट ऑन द परचेस प्राइस. तो परचेस प्राइस के डिस्काउंट पे इंटरेस्ट कॉस्ट कैलकुलेट करो. यहाँ पे हमने किया है, आई थिंक नेसूड एक है और डस्टी कंपनी, हाँ डस्टी कंपनी एक है. देखो, करंट इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, फिर ईओक्यू पे, करेक्ट, और लास्ट बल्क ऑर्डर में. तो ऐसा आप कैलकुलेशन, 3 अलग कैलकुलेशन करके विच इज द बेस्ट ऑप्शन, वो आप मैनेजमेंट को बता सकते हैं. आ जाओ. अगर मेरी रीऑर्डर क्वांटिटी इंक्रीज हुई तो मेरा एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगा. यानी रीऑर्डर क्वांटिटी बढ़ी तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम हो जाएंगे. करेक्ट, right? So my annual ordering cost will go down. If my ROQ, reorder quantity, comes down, then my number of orders will increase and my annual ordering cost will go up. If my ROQ goes up, right, my annual holding cost, my average inventory will go up and my annual holding cost will go up. If my ROQ goes down, my annual holding cost also will go down because number of units of inventory. फिर buffer inventory is nothing but the basic number of inventory that, or यूनिट्स ऑफ इन्वेंट्री दैट यू हैव केप्ट. जनरली बफर इन्वेंट्री ऐसा नंबर ऑफ डेज के फॉर्मेट में दिया होता है. कंपनी एज अ पॉलिसी ऑफ हैविंग 10 डेज, तो एनुअल डिमांड होगा ना, उसको डिवाइड बाय 360 या 365 करने का, इनटू नंबर ऑफ डेज डाल देने का, विल गिव यू बफर इन्वेंट्री. डायरेक्टली ऑल्सो कैन बी गिवन हाउ मेनी यूनिट्स, और दे कैन बी गिवन इन नंबर ऑफ डेज. 10 डेज वर्थ ऑफ इन्वेंट्री केप्ट एज बफर इन्वेंट्री. तो 360 डेज एनुअल डिमांड दिया ना, तो उसका 10 डेज निकाल लेने का. करेक्ट. दैट इज हाउ यू कैलकुलेट व्हाट, टेल मी, बफर इन्वेंट्री. ठीक है. हाँ, एक और assumption क्या है, that you don't have to buy the buffer inventory, it will not be part of annual demand, it is already there in your business. So उससे ना annual purchase price change होगी, ना annual ordering cost change होगी, but annual holding cost change होगी, because what will happen, your buffer inventory will be added to the average inventory. Correct. उसके बाद रीऑर्डर लेवल, फिर लास्ट का पार्ट था रीऑर्डर लेवल का. इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन होते हैं, बट मेरे को इधर आपको पीरियोडिक रिव्यू सिस्टम, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है. आज तक इस पे क्वेश्चन आया नहीं, मेरे को लगता भी नहीं आएगा. फिर भी एक बार देख के जाओ. राइट. कंटिन्यूस इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, इज व्हाट यू आर मैनेजिंग द इन्वेंट्री एवरी डे. राइट. तो योर रीऑर्डर लेवल विथ बफर इन्वेंट्री, रीऑर्डर लेवल विदाउट बफर इन्वेंट्री. रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला बहुत नॉर्मल है. मैक्सिमम वीकली क्या है,
डिमांड इंटू मैक्सिमम लीड टाइम, बराबर है क्या? राइट, दिस इज ROL. इफ बफर इन्वेंट्री इज एडेड देन योर फॉर्मूला विल चेंज. ये दोनों मल्टीप्लाई तो करना ही है, एड बफर इन्वेंट्री इनटू इट. यही सिंपल क्वेश्चन है. करेक्ट. तो दैट इज व्हाट ये. एक बार आपको ये देख के जाना है अगर, तो आप देख के जा सकते हो भाई पीरियोडिक रिव्यू सिस्टम. मेरे को ये रिवीजन करने में कोई मजा नहीं है. ठीक है. लास्ट है जस्ट इन टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेक्शन सी थियरी क्वेश्चन. हैज कम अप इन एग्जाम, आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स. फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का. क्योंकि क्या है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ना डज नॉट हैव अ लॉट ऑफ वेट फॉर अ बिग फुल फ्लेश 20 मार्क क्वेश्चन. तो क्या करेगा, 10-12 मार्क WSCC से पूछ लेगा या किधर से पूछेगा. ही विल गो फॉर व्हाट, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल. रिमेनिंग 5-10 मार्क्स विल बी फॉर व्हाट, थियरी. एंड थियरी ही विल एंड अप आस्किंग थियरी फ्रॉम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ओनली. एंड JIT system, most of the students, right, ignore this theory like anything, but it is very simple straightforward theory. There are 20 points, तीनों क्वेश्चन मिला के, and you have to remember what, those 20 points. Once those 20 points done, सब कुछ done. Correct. Have a look. Right. Aims of, or what is the JIT system? JIT system very simple. Correct. No, what inventory will ever be kept, so your inventory will always be zero. Once you receive the order from the customer, then only you will give order to the supplier, and you will keep all production everything ready. Production will be streamlined. Production में कोई waiting time नहीं होना चाहिए. Production में no problem of anything, no defective production allowed. Right. Fully 100% perfect, best quality product to be done. Customization by customer, right, is allowed. Customer can say ऐसा बना के दो, वैसा बना के दो, और make it this way, customize it this way, put my name on it, whatever it is. Correct. We have to do that, right? JIT system consists of a supply chain process where the inventory is reduced or completely eliminated. Correct. Generally तो eliminated, boss. Streamline the manufacturing process. कोई एक भी जगह पे you should not what, tell me, डू एनीथिंग, कोई चकाचक एकदम प्रोसेस होना चाहिए. द फॉलोइंग आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ JIT सिस्टम. करेक्ट. नील और नेग्लिजिबल स्टॉक कॉस्ट. करेक्ट. आइटम्स आर ओनली प्रोड्यूस्ड आफ्टर एन ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड. Characteristics of JIT: little room for error, higher quality, good supplier relation. Because see, once you receive the order, you are going to give to the supplier. So your lead time, that means time it takes from supplier to send the goods to your place, has to be very low or zero. Same day order दिया, same day supplier has to give you goods. Right? Frequent deliveries of small orders. Generally, annual ordering cost will be higher in what, your JIT, because you are going to order more frequently in small batches. You are not going to order and keep it in the warehouse. Warehouse का cost save हो गया. Don't need to have any storage unit, right? Because जैसा goods आएगा तुरंत it will put up in the production line, and goods should never be kept unattended. Aims of JIT: smooth flow of work to the manufacturing unit. Correct. A flexible production process which requires or works as per the customer's requirement. Customer ने बोला ना that I want this, I want that, your production. Because see, if you keep it already produced, then customer cannot make any additional request. But if you do not, or if you start the production once the order is received, you can take customized offer. Reduce in capital tied up in inventory. No inventory will be required. No inventory to be kept. Then last question, benefits of JIT. Characteristics and aims of JIT. I am telling you, if a question comes up, write a short note on JIT system or write something about JIT system. Right? 6 मार्क का क्वेश्चन है, चुपचाप कैरेक्टरिस्टिक्स, एम्स, बेनिफिट तीनों लिख के आना. डोंट थिंक टू मच. राइट. जस्ट हेडिंग बराबर देना, लिख के आना. करेक्ट. Benefits of JIT. If specifically benefits of JIT ask, use benefits of, or write only benefits. Better operational efficiency as the production process is streamlined and unnecessary steps are completely eliminated. कोई भी बीच में ऐसा time consuming step नहीं चाहिए. Low reworking cost as quality material is bought. If you are buying on the spot, you want quality material, and production process is streamlined. Lower investment in working capital as inventory is kept at minimum level. Storage cost of inventory is reduced. Yeah, zero. Lower material processing cost due to proper handling. The material should be handled very properly. Never should the material be kept unattended. Better relationship with supplier. Even if you have to pay extra, do that so that he can give you quality and on delivery and on time delivery. Correct. ये हो गया इन्वेंट्री. कैश एंड कैश मैनेजमेंट. राइट. मेरा ऐसा मानना है
if examiner wants to touch in section C this chapter, right, the best buy he has is this cash budget question. Cash forecast, cash budget दिख रहा है क्या तुमको? ये नहीं तो एडवांस क्वेश्चन इसमें का ही विल गो इन दिस डायरेक्शन ओनली. 100 ने, 200 ने, 500%, वो इधर ही जाएगा कैश फोरकास्ट में. इफ ही हैज टू गो सेक्शन सी क्वेश्चन फॉर वर्किंग कैपिटल, ही विल गो हियर ओनली. बाकी कोई क्वेश्चन में इतना दम है नहीं. If you ask me, that is what it is. 3 reasons for holding cost: transaction motive, precautionary motive, speculative motive. Transaction is day-to-day transaction, precautionary is for emergency conditions, speculative is for if you have extra money, please invest it somewhere. Correct? Then Baumol model. Baumol model is what? Tell me. If you have extra cash or shortage of cash every month, right, it is the optimum amount of investment to be done every time. So the formula EOQ का formula रहेगा, तो EOQ का formula is also what? EOQ का formula और Baumol का formula same. Under root 2 into AD, annual demand, into cost of ordering per order divided by cost of holding per unit per annum. यहाँ पे what is the formula? Tell me. Your under root 2 into annual savings or annual shortage of cash into transaction cost per transaction divided by holding cost of cash per annum or percentage per annum. Correct? So you can have a look. शॉर्टेज भी हो या एक्स्ट्रा कैश भी हो तो कोई टेंशन नहीं. फिर मिलर और मॉडल, हैव अ लुक. मिलर और मॉडल has 3 formulas. The spread formula that is there, right, is what? So Miller-Orr model helps you understand or get the lower and the upper limit के बारे में बात करने के लिए easy होता है, right? Lower and upper limit. It tells you the lower limit and you are told to calculate the spread and go to the upper limit. Correct? So spread का formula क्या है? 3 multiplied by bracket, bigger bracket, smaller bracket, 3 by 4 into transaction cost into variance of cash flow. Variance of cash flow is nothing but standard deviation square. Sometimes standard deviation is also given. If standard deviation is given, square of the standard deviation and use the variance of cash flow. The whole divided by interest rate per day. याद रखना, interest rate per day. Interest rate per day has to be there. Correct? So if your percentage is 7.2% per annum, that is given, divided by 360 or 365, whatever is given in the question. Correct? Then that whole raised to 1 by 3 multiply by 3. This calculation generally requires a scientific calculator. So please, if you are carrying normal calculator, please use scientific calculator in the exam screen, or you can use 2 calculators there. No issues. Correct? Miller-Orr model example, right? And also in Miller-Orr model, you have to find Z or the return point, that is lower level plus 1/3 spread. Don't worry, this formula is given in the exam, right? But I think my students, I'm very confident that they have done it 4 or 5 times. We did a lot of questions, so you remember how to do it. फिर एक कैश बजट, एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, उस तरीके से कैश बजट और कैश फोरकास्ट इज टू बी डन. सो व्हाट यू डू, यू हैव अ बैलेंस शीट दैट इज गिवन, then there are adjustments that are given, that are done to the balance sheet or the particulars of the balance sheet. You change those for 1 year, whatever is happening in that 1 year, right? You do that, and then at the end, cash is nothing but your balancing amount. If you have a shortage of amount in assets, then you have a cash. But if you have a shortage of amount in liabilities, that means, सुनो, if your liabilities are more without adding cash, देखो हर एक करंट एसेट, नॉन करंट एसेट है, उसका सम एडजस्टमेंट विल बी गिवन. यू विल हैव टू वर्क विद दैट एडजस्टमेंट, increase decrease the amount and write the new amount, right? I have taught this. I think Puma's company was a question that I told students to solve, right? उसमें working capital भी था और cash भी था, right? Their cash balance was given, correct or not? Just a second. See, I have written note also for this. देखो, process of balance sheet method, cash or working capital question, right? If there is a cash question, तो क्या करेंगे? Correct? Give effect of all adjustment and find total of both sides. If assets are more, liabilities are less, then there is bank OD. If asset is less, liability is more, cash balance is there current asset में. बराबर है balancing figure, right? नॉर्मल क्वेश्चन में भी कुछ कुछ इसमें कैश का भी बैलेंस दे देंगे, ओडी का भी बैलेंस दे देंगे.
यू हैव टू देन बैलेंस शीट का एक बनाना है, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। फिर कैश फोरकास्ट, ये बढ़िया क्वेश्चन है। कैश फोरकास्ट में यू हैव टू यूज द बेसिक लॉजिक्स अलॉट, करेक्ट। कैश फोरकास्ट में क्या है, अकाउंट रिसीवेबल से कितना कैश आया, यू हैव टू कैलकुलेट दैट। आई हैव डन वन क्वेश्चन फुल्ली, ये अंश कंपनी बोल के क्वेश्चन लिया था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इफ यू वांट यू कैन हैव अ लुक। इसमें ना मेरे सिखाने जैसा कुछ नहीं है, राइट। हाँ, बट सर्टेन फॉर्मूलेज दैट आर देयर कैश फोरकास्ट में, कि व्हाट इज प्रोडक्शन, व्हाट इज ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, व्हाट इज सीओजीएस। सीओजीएस का फॉर्मूला आई हैव टॉट हियर, राइट। व्हाट इज सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है, रॉ मटेरियल परचेस होता है वो क्या है, करेक्ट। परचेस ऑफ रॉ मटेरियल हाउ टू फाइंड आउट, प्रोडक्शन कैसे फाइंड आउट करने का एक क्वेश्चन है इस पे, राइट। ऑस्ट्रेलिया कंपनी, ये नहीं, ये कौन सा है ऑस्ट्रेलिया कंपनी, ईओक्यू बल्ड डिस्काउंट नहीं, रिडीमेबल डेट नहीं, रुको रुको, एक क्वेश्चन किया था ना रे अपन ने, फ्लिट कंपनी किया, अंश कंपनी किया, जेडएससी, जेडएससी आपको दिया था मैंने। ला फॉरगे, ला फॉरगे भी अच्छा क्वेश्चन था, नहीं ला फॉरगे इज टीआरपी वो। जेडएससी हैव यू डन, जेडएससी आपने करना चाहिए, जेडएससी कंपनी। फ्लिट कंपनी में भी कैश फोरकास्ट का क्वेश्चन है, यू कैन ट्राई दैट क्वेश्चन, कैश फोरकास्ट ट्राई कर सकते हैं आप, गिव इट अ ट्राई, ठीक है। देख लो, कैश रिसीट्स इधर ही जाने वाला एग्जामिनर, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। फिर कैश बजट, जेडएससी कंपनी है, दो तीन और क्वेश्चन है, गिव इट अ ट्राई, ठीक। चल, उसके बाद चलो, आपको कुछ छोटे नोट्स दिए मैंने, आई सेंट यू द नोट्स नो, रिमाइंडर थियरी बोल के, किधर गया रे, पार्ट 1 रिमाइंडर थियरी, आ जाओ। एफएम एनवायरनमेंट एंड एफएम मार्केट, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये हो गया, एग्जीक्यूटिव सॉफ्ट भी हो गया कल अपना, यहाँ से नहीं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑल्सो डन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑल्सो डन, हाँ आ जाओ। एफएम एनवायरनमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, क्या क्या मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स है, अचीविंग इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ, राइट, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑल रिसोर्सेज, प्राइस स्टेबिलिटी, करेक्ट, that is control of inflation, positive balance of payment, balance of payment is nothing but export minus import, correct, equal distribution of wealth, correct। ये macro economic target of a company has been asked before, right, from below 6 7 options, what are the 4 macroeconomic targets of a company, or 2 or microeconomic targets of an economy, not a company, correct। Then it is what, if government wants to achieve all these macroeconomic targets, तो तीन पॉलिसी, तीन तरह की पॉलिसी है, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फॉरेक्स पॉलिसी। फिजिकल पॉलिसी क्या बोलती है, बोलो, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट बोरोइंग और टैक्सेशन, ये तीन चीजों को फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, राइट। एंड मॉनेटरी पॉलिसी इज व्हाट, मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट, करेक्ट। एंड देयर इज फॉरेक्स पॉलिसी, फॉरेक्स में तीन तरह की पॉलिसी है, कंट्रोल्ड फॉरेक्स पॉलिसी, अनकंट्रोल्ड फॉरेक्स पॉलिसी, मिनिमम रेगुलेटेड फॉरेक्स पॉलिसी, करेक्ट। कंट्रोल्ड फॉरेक्स पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट पूरा रेट कंट्रोल करता है, ऑल द फॉरेक्स और ऑल द फॉरेन करेंसीज का रेट गवर्नमेंट कंट्रोल करता है। अनकंट्रोल्ड फॉरेक्स पॉलिसी मतलब क्या, गवर्नमेंट सेज ऑल द फॉरेक्स के रेट्स विल बी डिसाइड ऑन अनकंट्रोल्ड, दैट मीन्स व्हाट, टेल मी, government is not going to interrupt, right, and all will be dependent on demand and supply of currencies। last, minimum regulated forex policy मतलब क्या, मिनिमम रेगुलेटेड मतलब बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड, मिनिमम रेगुलेटेड मींस इफ, क्या है, डिमांड और सप्लाई तो देखेंगे, बट अगर कुछ इम्बैलेंस हो गया तो गवर्नमेंट विल स्टेप इन एंड ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन, करेक्ट। दीज आर द 3 फॉरेक्स पॉलिसी मेजर्स। मैंने आज तक इस पे क्वेश्चन नहीं देखा है, बट हाँ फिजिकल और मॉनेटरी पे है क्या, अरे दुनिया भर के क्वेश्चन है, करेक्ट। फिजिकल पॉलिसी में द गवर्नमेंट कैन हैव 2 टाइप्स ऑफ पॉलिसी मेजर्स, वन इज expansionary fiscal policy measures, contractionary fiscal policy measures। In expansionary means what, government wants to expand the economy, so it will increase the spending, it will borrow more, spend more, and will reduce the taxation rate, correct, so that economic growth happens, so that aggregate demand increases, people have more money, they will demand more, and the purchasing power will go up। Contractionary fiscal policy measures क्या है, your
Government spending will reduce because it wants to contract the economy, not expand the economy. Taxation will increase. It will not want people to have money, right? It will help in control inflation. It will help to keep the aggregate demand in check, and it will reduce the purchasing power, correct? Then problems with fiscal policy are crowding out and tax incentives. Crowding out is very simple, correct? See, generally your risky investment gives you high return, so your stock market gives high return, government securities give you low return. Abhi, what happens if government needs money and it increases the what, the risk free rate of government bonds, तो क्या होगा? If risk free rate increases, people will start moving from your what, tell me, stock market or risky investment to less risky, because government starts giving more return. जैसे ही गवर्नमेंट इंक्रीज करेगा रिटर्न देने का, राइट, एंड ऑलमोस्ट सिमिलर टू व्हाट रिस्की इन्वेस्टमेंट्स आर, देन एवरीवन वुड गो टू व्हाट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बिकॉज गवर्नमेंट इज गिविंग अ वेरी हाई रिटर्न. बराबर है क्या? देख लो. एंड दिस is what, the problem of crowding out means from risky investment everyone will crowd out and go to the government investments. Then the tax incentive, correct? Government is going to do what? Just a second. Chalo. Tax incentive means what? Tell me. A tax reforms in which the government wants was, see, in tax incentive what it will do, whatever government wants you to do, it will motivate you by giving tax incentives, right? And wherever it wants you to demotivate you to do something, right, it will increase the tax rate, right? That is how it will be. Then monetary policy, right? Monetary policy, देखो जरा monetary policy. एक्सपांशनरी मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स एंड कॉन्ट्रैक्शनली मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स. थोड़ा सुन लो. मनी सप्लाई, if it increases and interest rate reduce, correct, then what will happen? You are doing a expansionary monetary policy measures, because monetary policy takes care of two things: money supply and interest rate. If money supply increases, interest rate reduce. Money supply increase, more money with the people, more money with the people, people will have more purchasing power and will enjoy the what, tell me, higher money liquidity with them. Interest rate reduced, people will be motivated to take more loans because interest rate is lower, right? Now reserve ratio, here bank has to keep a reserve ratio or reserve with the RBI. Now, all the banks in the country have to keep a reserve, some amount, $100 if they get as deposit, some amount they have to keep as what, reserve with the RBI. If RBI reduces that reserve, right, from 20% to 10%, so the bank has more money with them, right? More money means they will be able to borrow more in the, or lend more into the market, right? And also if government wants that, boss, more money supply should be there, what will happen? Government ka securities that are floating in the market, government will buy the securities and pay money to the banks. Generally bank only invest in the government bonds, so government bonds, right, will be bought back by the governments from these banks at a good rate, right? And hence more money supply will be there. More money supply means more investment in production. More investment in production, that means Indian demand or any demand of a country will be fulfilled and export will increase. If export increases, balance of payment will go up and there will be a what, lot of foreign currency that comes up, and because of that you will have a lot of supply of foreign currency, demand will be comparatively less, and hence what will happen? Decrease in foreign forex rate, so home currency will increase in value, foreign currency will depreciate in value. Contractionary monetary policy measures, money supply reduces, interest rate goes up, the government wants to take back the money from the market, so it will increase the reserve ratio. Whatever government starts selling securities and takes the liquidity from the bank, correct? And then money supply, if it goes down, investment in production facilities will go down, your export will go down but your import will increase, correct? Hence balance of payment will go down, you will not have a lot of foreign currency supply, the demand for foreign supply will be, or foreign currency will be higher, and hence
home currency will be what? Depreciated. Foreign currency appreciated. A pura table has, I think, 6-7 MCQs in this. You can go through it once. All this I have taught. Then types of inflation, demand pull inflation and cost push inflation. Demand pull means what? Because of a lot of demand, the price of the goods increase. And cost push, because of the raw material cost going up, the inflation goes up. Types of competitive position: monopoly, duopoly, cartel, perfect competition. Monopoly is only one seller, is the price setter. Duopoly means two seller coming together and setting prices. Cartel means a group of people coming together and deciding prices. Perfect competition means market forces decide the prices. No one seller or no group decide the prices. Right? Then your FM environment, correct? Extra notes that are there, right? Aa jao jaldi, correct? There is basics, financial intermediary and their advantage, types of market, right? Euro currency market and treasury function. Basic financial system has a financial market where stock market, your money market, capital market, all these markets are there. Financial institutions, correct? Investment banks, domestic and international banks, through which you function in the financial market. And last but not the least, financial securities, correct? Equity share, loan notes, etc. Right? That is how financial securities work out. Financial intermediary, right, is someone where people deposit money and people borrow money from, right? So they charge or they give you lower interest on the deposits and they charge higher interest on your borrowings, correct? So that is the difference is there. What? Tell me their income. Then benefits of financial intermediary. Benefits of financial intermediary are maturity transformation. A financial intermediary will take short-term deposits and convert it into transform it into long-term borrowings. Aggregation of funds means what? Small value of deposits will be taken. They will aggregate and make a big deposit or big borrowing out of it. Pooling of losses individually if you directly invest in any business, correct? So you will lose your full money. But when you invest through a bank or financial institute, your full money will be divided among a lot of people and you will not lose your full money, right? You lose a part of it if some business fails and not your full money. Disintermediation means what? We started lifting the bank or getting the intermediary out of the picture and directly investing into the companies to a stock market, right? And directly taking ownership in the company. Types of market: primary market, secondary market. Primary market में IPO, first sale of the what? Tell me. Shares happen in the what? Share market. That is the primary market. And then secondary market is basically where you try to resell the stocks purchased directly from the company. Then there is a financial market, two parts of market: money market and capital market. Money market has what? Less than 12 months what instruments. They are generally interest bearing and discount bearing. Interest bearing mein money market deposit between banks. It is done between banks for a short term, correct? Bank lend to each other, not really very important. But money market deposit bola, so it is between banks, right? And it is a non-negotiable. Two banks lending to each other, it is not a negotiable instrument, right? But when it comes to certificate of deposit between investor and bank says right now $100 invest will give you 100 or will give you 2% return on that, right? It is a commercial or certificate of deposit which is a negotiable instrument. You can encash it somewhere, right? Get your money, correct? Then repurchase agreement, repos are what? You sell something right now to repurchase at a higher price on a later date from anyone. These are also non-negotiable instruments. Discount bearing securities, treasury bills, government backed securities, correct? Those are negotiable instrument. Treasury bills, government ke bills, correct? Government backed securities, one of the most risk free, right, instrument in the world is a treasury bill. Or maybe US government treasury bill, correct? Then commercial paper of big corporations, correct? You go and lend for a short term to big corporations. These are also negotiable. You can sell them. Acceptance credit or bill discounted commercial bill, non-negotiable because they are what? Discounted bills, correct? And bill of exchange, right? IOU contracts. If it is a bill of exchange, you can sell that bill of exchange. But if it is an acceptance credit or discounted bill, then you cannot sell it ahead in the market. So it is non-negotiable, correct? That is how it is. Then you have what? Capital market, which generally more than 12 months. Risk profile. Treasury bills are most risk free
what instruments. Second ranking is certificate of deposit. Ranking has also been asked in exam. Huh? What rank? What rank is the, tell me, where do you rank these particular instruments in terms of risk और रैंकिंग फ्रॉम द लोएस्ट रिस्क फर्स्ट. तो मैंने लोएस्ट से हाईएस्ट गया हूं मैं. ट्रेजरी बिल फर्स्ट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट सेकंड, कमर्शियल पेपर लार्ज अमाउंट इनसिक्योर्ड विथ बिग कॉर्पोरेशन थर्ड, एंड फोर्थ इज एक्सेप्टेंस क्रेडिट और बिल ऑफ एक्सचेंज. अभी बोल रहा हूँ दिस टेबल हैज अराउंड 7 to 8 MCQs करेक्ट कवर्ड. उसके बाद चलो ये हो गया. आई थिंक वी आर डन विथ. इसमें खाली हाँ, इन द कैपिटल मार्केट यू हैव समथिंग कॉल्ड एज यूरो बॉन्ड, लॉन्ग टर्म loan notes या bonds which are issued. Euro bonds does not mean bonds that are what? Euro currency. Euro bond means what? If I'm in India and I'm doing a dollar or issue of dollar bonds, it is called as, or a foreign currency bond, it is called as a Euro bond. Correct? Have a look. They are also called as external bonds. And Euro currency loan means a loan taken in foreign currency by a local businessman. Right? Then last but not the least, treasury function. Actually इसका part नहीं था, but I took it here only. ट्रेजरी फंक्शन में जनरली यू डू कैश एंड लिक्विडिटी मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट फाइनेंस, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब ऑल द कोर फंक्शंस ऑफ ट्रेजरी मैनेजमेंट. जो हम फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात करते हैं, हियर दे टॉक अबाउट इट इन ट्रेजरी डिपार्टमेंट. दे नॉट व्हाट दे डिड, एक बड़ा अम्ब्रेला बना दिया फाइनेंस डिपार्टमेंट का, अब उन्होंने ट्रेजरी बना दिया उसको, और उसको 3-4 छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया. हमको ये इंपॉर्टेंट नहीं है व्हाट कोर फंक्शन ऑफ ट्रेजरी. फॉर अस सेक्शन सी क्वेश्चन क्या है? एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेंट्रल ट्रेजरी फंक्शन एंड डिसेंट्रलाइज्ड ट्रेजरी फंक्शन. देखो इधर बात क्या हो रही है. सेंट्रलाइज मींस व्हाट? देयर इज वन कंपनी, लेट्स से देयर इज अ MNC, multinational company which has presence I think all over the world, right? How does that operate? Hear me out. US में there is a treasury function, all decisions are taken by US. It has all branches, India, Australia, यहाँ सब जगह branches है, correct? But all the core decisions are taken from USA. It is called as centralized treasury function. All financing decisions are taken from USA. But if you are fragmented, that means USA का decision is taken by USA Treasury Department, India का Indian Treasury Department, your Australia का Australia Treasury Department, then there is a decentralized treasury function. That it is every country will take care of its own treasury department. एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज उसके कुछ ऐसे है. सेंट्रलाइज का एडवांटेज है दैट इफ यू आर सेंट्रली लोकेटेड, करेक्ट, you can and what easily manage efficiently what the foreign exposure. Some country has to give some currency to some other country, और ये करेंसी को भी ए को डॉलर देना, बी को, बी को डॉलर देना, सी को, करेक्ट. तो इंस्टेड ऑफ गिविंग टू ए एंड देन बी एंड देन सी, directly A should give to C, is what the foreign exposure can be managed efficiently means. Economies of scale. Whenever one company is borrowing a very high amount, right, and is a frequent bank borrower, then it will get a reduced rate, correct, than a normal decentralized treasury or decentralized system, correct. Then reduction of borrowing due to cash surplus. वन और इधर उधर कैश सरप्लस है तो बोरोइंग में रिडक्शन हो जाएगा. अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट्स इन सेंट्रल टीम, करेक्ट. You will have less experts are there and they will be in the central team. Lower precautionary cash balance can be held. एक जगह ही precautionary cash balance. This company or this main treasury function will support everyone. Less autonomy to local subsidiary, a disadvantage. Now see, Indian system, Indian people only know. USA people cannot take a what? Tell me. Decisions for Indian company from here. Delayed response to local economic condition होता है. Centralized team has less information about the local condition. वही डिसेंट्रलाइज में एडवांटेज, लोकल एसेट एंड लायबिलिटीज कैन बी मैनेज इन अ बेटर वे. इंडिया वाला इंडिया का काम सही से कर सकता है. ग्रेटर ऑटोनॉमी टू लोकल सब्सिडरीज, राइट. बेटर एंड क्विक रिस्पॉन्स टू चेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशन. डिसएडवांटेजेस यहाँ पे, हायर रेट ऑफ बोरोइंग इन लोकल मार्केट, करेक्ट, एंड नो एक्सपर्ट टीम अवेलेबल इन लोकल मार्केट. हर जगह एक्सपर्ट मिलेगा नहीं तुमको, राइट. लोकल मार्केट में हायर रेट ऑफ बोरोइंग, फॉरेन एक्सपोजर कैन नॉट बी मैनेज्ड एफिशिएंटली, राइट. एक दूसरे को पैसा देना है, यू हैव टू normally give that money, it cannot be efficiently handled centrally, and higher precautionary cash is kept. ये क्या है, एक बाजू अगर लर्न कर लो ना, यही एडवांटेज इसके डिसएडवांटेज है, इसी के डिसएडवांटेज इधर एडवांटेज है, तो अकॉर्डिंगली यू कैन डू. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, ये मेरा है अबाउट दिस. डिविडेंड पॉलिसी भी कर लेते क्या, फटाफट काम खत्म हो जाएगा. आ जाओ.
Dividend policy, very simple. Basics, there are three or four, five types of dividend policy, 5 to 6 types. There is a constant payout of dividend, correct? With growth, constant payout ratio, and without growth. एक होता है कि सर सेम कांस्टेंट पे आउट हो रहा है, 5 given every year. It is a constant without growth type of dividend policy, correct? Which is used by generally old and mature company. 5, 7, 9, 11, 17, 19, 15, every year 10% increase. It is constant with growth dividend policy used generally by old and mature company, but the growth rate will be what thought about quite in detail. फिर डिविडेंड पेड 5, 15, 0, 500, 20, 30, whatever ऊपर नीचे होता रहेगा every year is a residual policy generally used by young and growing company, right? That is how it is, right? And then zero dividend policy, that means no dividend to be paid, right? The company does not pay dividend. ठीक है, एक प्रॉब्लम है खाली constant payout ratio where they say that dividend paid, right, will be constant, or dividend payout ratio DPR will be constant till the last day. So whatever profit into dividend. So generally it is said that a settled dividend policy is very good, because if the dividend goes up and down, correct, problem हो सकता है क्या? हो सकता है, correct, right? Then what are the factors that you have to consider before formulating a dividend policy, right? Profitability. If there is profitability, then only you can give dividend. Liquidity. If you don't have cash, you cannot give dividend. So liquidity होना चाहिए. Legal and covenant limitation. That is bank का rules and regulation आपको देखना पड़ेगा, because when bank gives you loans, right, a covenant, that is rules and regulation are given that you cannot pay dividend before paying interest to us, because a lot of companies, what they do, they pay interest afterwards, or don't pay interest and say we don't have money, but they have paid dividend already. Then availability of finance. Do you have money to pay dividend? Level of financial management. If there is a very high gearing, right, then low dividend will be paid. Because of high gearing, high interest will be cost or charge, and because of that you will have low dividend. Low gearing. If you have low gearing, then high dividend can be paid. And then market factors, correct? What are the market factors? Whether the market is going to what? Tell me. Come up or come down. Covenant का पूरा definition दिया है, that financial institution limit the payment of dividend and may force the borrower to pay interest before dividend. Alternative to cash dividend. अच्छा जरा alternative to cash dividend क्या है? You can do a, in place of dividend, you can do a scrip, or the liability of dividend can be repaid by what? Equity shares, correct? So you will give more holding to the existing shareholders, or holding तो same रहेगा but more shares, correct, right? So liability of dividend, right? Or share buyback. Instead of, you sometimes what happens, you have a very super profit, so you pay one very high dividend, correct, and the whole market is happy that boss very high dividend, correct? Instead of that, don't do that, correct? Instead of that, prefer a share buyback. Reduce your liability so that in the future dividend liabilities reduce. Then you have what? A scrip dividend is, instead of dividend you pay or you give shares to the person, correct, or the equity shareholder. Scrip issue is bonus shares. Bonus shares means what? Free shares, capitalization of reserves. They both are different, correct? Scrip issue never leads to dilution of control, but scrip dividend, if some of the equity shareholders say we don't want equity shares in place of dividend, we want cash only, then there will be a dilution of control. एक और लास्ट पार्ट है डिविडेंड रिलेवेंस थियरी. एक मिनट, आई विल गेट दैट शीट ऑल्सो. मतलब खत्म हो जाए वो, बाकी कुछ नहीं. आ जाओ. डिविडेंड पॉलिसी आई हैव ब्रॉट अप हियर. ये रहा फैक्टर्स टू कंसिडर इफ यू वांट टू रीड इन डिटेल. ये डिटेल में रीड कर सकते हो. डिविडेंड, इफ यू हैव वेरी हाई डिविडेंड, और डिविडेंड रिलेवेंस थ्योरी. व्हाट डज डिविडेंड रिलेवेंस एंड डिविडेंड इररिलेवेंसी थ्योरी से? एम का डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी है. दे से दैट डिविडेंड पेमेंट स्ट्रीम or policy has no impact on share prices, but in real life it does, correct? If dividend go up and down, share prices will have an impact. Share prices, but M&M dividend irrelevant theory says that share prices are not at all influenced by dividend, but they are influenced by positive NPV projects, correct? Dividend payment are completely irrelevant and has no impact on share price, correct? They say you can manufacture, if you want dividend, you sell part of the shares and get your dividend, correct? Manufacture your dividend, right? Then there is dividend relevance theory. Signaling impact, clientele effect, preference of shareholder to have current income. Signaling impact means what? High
or low dividend or failure to pay dividend can be perceived as a negatively by the investor as a alarm sign. Clientele effect. Clientele effect means what? Tell me. A sudden change, right? See, an investor always knows that he's going to get X amount of dividend, Y amount of dividend. So accordingly, he plans his investments, correct? And now, right, what happens? Basically, he will investors liquidity needs and tax plans will be disrupted if you change your dividend policy. And any shareholder would prefer current income rather than future CG, because CG pay you have to pay what? Taxes. But on dividend generally is in most of the countries it is tax free. This is what your, tell me, dividend policy holds. With this I think revision तो done है. एक 10 मिनट का break ले लो. After that we can go into that paper का discussion, right? चल quickly come back by 3:50.
चलो एवरीबॉडी कम बैक क्विकली, लेट्स डू दिस क्वेश्चन। आ जाओ जरा, चले क्विकली लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। आ जाओ। दिस वाज द प्री मॉक क्वेश्चन, देख लो एवरीबॉडी। प्री मॉक क्वेश्चन, इस टाइम वाला प्री मॉक क्वेश्चन इन योर एक्चुअल एसीसीए क्या है। एनवायरमेंट करेगा सॉल्व। आ जाओ। सिनेरियो रिलेट्स टू थ्री रिक्वायरमेंट। स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बनबरी कंपनी इंक्लूड्स द फॉलोइंग। बराबर है। ऑर्डिनरी शेयर 20 million, $1 each share means how many shares are there? Tell me. चलो क्विकली क्विकली। 20 million share, reserve 15 million, non-current liability 7%, convertible loan notes, okay, and 5% preference shares, no problem. Benbury has equity beta of 1.3 and ex-dividend market value of the company's equity is $80 million. Direct ex-dividend market value of company's equity दे दिया है, correct, equity beta दिया है। X interest market value of convertible loan note is $18 million and the ex-dividend market value of irredeemable preference share is 5.5. These are what, market values or what? Tell me. बोलो, मार्केट वैल्यूज है या बुक वैल्यूज है? टेल मी दिस पैरा। ये मार्केट वैल्यूज है बॉस, करेक्ट। द कन्वर्टेबल लोन नोट ऑफ बेनबरी कंपनी हैव अ कन्वर्जन रेशियो ऑफ 20 ऑर्डिनरी शेयर पर लोन नोट और दे आर रिडीमेबल एट par, right? They are redeemable at what? Par. The conversion date and redemption date are both on the same date in 5 years time, correct? Then the current ordinary share price of Benbury is expected to increase 4% per year. The equity risk premium is 5%. बढ़िया है, right? Risk free rate is 3.5%. अभी tell me, can I calculate what they have asked you? Calculate after tax weighted average cost of capital. Can we use the table method to calculate WACC? आ जाओ। I will copy this question and I will say what? Tell me. ये रहा, calculation of the market value after tax weighted average cost of capital of Bunbury company. I will say source of capital, correct. I will say market value of capital. I will say cost of capital, correct. Or rather I will say weight first, weight of capital in total capital, correct. आ जाओ, okay, in total capital. F2 does not work here, ठीक है, ऐसा है, ठीक। एंड देन आई विल से वेट इनटू कॉस्ट और इसका टोटल विल बी WACC। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? बोलो जरा। यू कैन डू व्हाट? बोल्ड टू दिस। इतना ही ऑप्शन आपके पास है, बाकी आई डोंट थिंक आपके पास कुछ ज्यादा ऑप्शन होता है। सर जैसे जैसे हाँ, बोलो। इसमें पॉइंट होता है, उस पॉइंट को अगर कम करना है मुझे, जैसे मतलब 7.70 आ नहीं गया वो अभी। सब मत करो ना, मतलब ये बोल रहे हो ना आप, क्या बोलते हैं, उससे अच्छा ये पॉइंट कर को दो। हटाना है। हाँ, उससे अच्छा ये कर दो ना। पॉइंट को क्यों हटाते हो? पॉइंट को हटा के क्या करोगे? इसमें नहीं होता ना वो। नहीं नहीं, पॉइंट मतलब समझा नहीं मैं। जैसे 7.709 आ गया लास्ट में। हाँ हाँ, इसमें तो वो मतलब जो कर सकते लास्ट। हो ना, यहाँ है ना वो ऑप्शन फॉर्मेट एज नंबर, वो करेंगे ना अपन। आ जाओ ना। सबसे पहले देखो, इक्विटी है मेरा, करेक्ट। इक्विटी का मार्केट वैल्यू कितना है दिया है यहाँ पे, आज का मार्केट वैल्यू कितना है, एक्स डिविडेंड मार्केट वैल्यू 80 million। मैंने लिख दिया 80 करेक्ट। इधर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल में लिख दिया अमाउंट इन डॉलर मिलियंस, ठीक है ना, राइट। अब आ गया 80, उसके बाद आ गया कन्वर्टेबल डेट, यानी प्रेफरेंस शेयर है ना, प्रेफरेंस शेयर का मार्केट वैल्यू दिया है करे, कन्वर्टेबल डेट एक्सक्लूडिंग मार्केट, हाँ, प्रेफरेंस शेयर 5.5 million, करेक्ट। एंड कन्वर्टेबल डेट, करेक्ट, कन्वर्टेबल डेट का 18 million, 18 million,
करेक्ट, यानी टोटल कैपिटल कितना है? कुछ और है क्या? होम लोन नोट वगैरह ऐसा कुछ कुछ भी तो नहीं लग रहा है आई थिंक। राइट, तो टोटल कितना है? सम, ब्रैकेट ओपन, ये रहा सम, 103.5। अभी वेट कैसे निकालेंगे? दिस डिवाइडेड बाय 103.5 इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 103.5, दिस। करेक्ट। इसको मेरे को परसेंटेज करना है अगर, तो मैं यहाँ जा सकता हूँ। करेक्ट। और इसको कस्टम में जाके इधर फॉर्मेट सेल में मैं परसेंट कर सकता हूँ, 0.00। ठीक है ना, यानी दो पॉइंट दिखेंगे। ओके कर दिया मैंने। ठीक है। तो अब ये दो परसेंटेज दिखेंगे, 77.29, 5.31, 17.39। अब कॉस्ट तो मेरे को निकालने पड़ेंगे, तो मैं करूंगा वर्किंग नोट वन, के ई कैलकुलेशन। के ई कैलकुलेशन कैसे होगा बताओ मेरे को? इक्विटी बिटा दिया है, राइट, एंड रिस्क फ्री रेट, तो के ई होगा के ई बाय सी ए पी एम मेथड होगा। के ई बाय सी ए पी एम मेथड, राइट। तो कैसे होगा? के ई इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा इक्विटी इंटू आर एम माइनस आर एफ। करेक्ट। तो अपने पास आर एफ है क्या? आर एफ कितना है बोलो? इक्विटी रिस्क प्रीमियम 5%, रिस्क फ्री रेट इज 3.5%। 3.5%। करेक्ट। आर एम माइनस आर एफ भी दिया हुआ है, आर एम माइनस आर एफ कितना है? 5%। करेक्ट। बीटा इक्विटी दिया है, कितना है बीटा इक्विटी? 1.3। तो चलो के ई निकालते क्या? हाउ मच इज के ई? के ई इज इक्वल टू 3.5 प्लस ब्रैकेट 1.3 इंटू 5%। देख लो, इसको फिर परसेंटेज में डिवाइड कर दो। ओके। अरे परसेंटेज नहीं हुआ, ये क्या हुआ भाई? हाँ, 10% आ गया क्या के ई? देख लो, 10% इज के ई। चलो उसके बाद आगे बढ़ो। अब निकालना है अपने को क्या? बोलो। हाँ, अब मैं माय क्वेश्चन टू यू, केपीएस कैसे निकालेंगे? केपीएस, के ई तो निकल गया, देखो 10% आ गया, दिस 10% विल बी डन ईयर, राइट। ये रहा 10%। केपीएस कैसे निकालेंगे? आ जाओ जरा, कैलकुलेशन केपीएस, राइट। फॉर्मूला क्या है? डी वन बोला है क्या? डी वन, राइट। तो केपीएस इज इक्वल टू डी और डिविडेंड डिवाइडेड बाय P0। करेक्ट। अब यहाँ पे जो दिया है, दिस एक्स डिविडेंड मार्केट वैल्यू, इज इट फॉर वन वन शेयर और इज इट फॉर फुल व्हाट? 10 मिलियन शेयर्स। फुल 10 मिलियन शेयर्स। तो मैं कैसे निकालूंगा? डिविडेंड पर शेयर निकालूंगा, डिविडेंड पर शेयर निकालूंगा, डिविडेंड पर शेयर कैसे निकलेगा? हैव अ लुक। योर सबसे पहले डिविडेंड पर शेयर कैसे निकलेगा? देर आर 10 मिलियन शेयर्स, राइट। 10 मिलियन लिख देता हूं, एंड $1 ईच। करेक्ट। $1, यानी कितने शेयर्स हो गए? वॉट एवर नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, 10 मिलियन ही नंबर ऑफ शेयर्स है। करेक्ट। और आप पे करोगे कितना? 5%। करेक्ट। तो मैं ऐसा निकालूंगा, पहले तो ऐसा करता हूँ, रुको, इज इक्वल टू 10 मिलियन। 10 मिलियन है ना, 1 2 3 5 6 इंटू 5%, ये डिविडेंड टोटल डिवाइडेड बाय 10 मिलियन शेयर्स। कितना है डिविडेंड? $0.05 पर शेयर। करेक्ट। और मार्केट वैल्यू पर शेयर कैसे निकलेगी? मार्केट वैल्यू पर शेयर कैसे निकालूंगा? द टोटल मार्केट वैल्यू इज 5.5 मिलियन, बराबर ना? 5.5 मिलियन, ये हो गया 5.5 मिलियन डिवाइडेड बाय 10 मिलियन शेयर्स। करेक्ट, 0.55। सो केपीएस देन इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, राइट। और इसको हम परसेंटेज में डिवाइड कर देंगे, इधर है परसेंटेज 9.09%, ये इधर डाल दिया। करेक्ट। केपीएस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्या है आपका? कैलकुलेशन ऑफ केडी।
वन माइनस टैक्स रेट दिया है क्या भाई? टैक्स रेट, हैव अ लुक, टैक्स रेट इज गिवन, यस, राइट। तो यार इट इज अ कन्वर्टेबल डेट, तो सबसे पहले आई विल डू पर्टिकुलर्स, 0 1 2 3 4 and 5 years है। व्हाट इज द मार्केट वैल्यू पर लोन नोट? मार्केट वैल्यू पर लोन नोट कैसे निकालोगे? टोटल 18 मिलियन की वैल्यू है, डिवाइडेड बाय हाउ मेनी लोन नोट्स आर देयर, $100 के 20 मिलियन लोन नोट्स है। कैसे निकालोगे भाई? बोलो। आप ऐसा भी कर सकते हो, 20 मिलियन डिवाइडेड बाय $100, यानी कितने? 0.2 मिलियन लोन नोट्स है, 0.2 यानी 200,000 लोन नोट्स है। तो $90 इज द मार्केट वैल्यू, दिस हैज टू बी पुट इन नेगेटिव, क्योंकि आईआरआर कैलकुलेट करना है। $90 इज द वैल्यू पर लोन नोट, इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स लिखना पड़ेगा, टू वन माइनस टैक्स रेट, करेक्ट। सो पर लोन नोट, $100 के लोन नोट पे इंटरेस्ट कितना है? 7% इंटू 1 - 0.2, दैट इज टैक्स रेट, करेक्ट। सो $5.6 per loan note is the value, correct. And last but not the least is your redemption value, redemption value के लिए redemption value और conversion value whichever is lower, ये whichever is higher, whichever is higher रहे, higher। चलो फिर redemption value क्या बोला है, आ जाओ जरा। The convertible loan note has a conversion ratio of 20 and they are redeemable at par, मतलब इधर नीचे करता हूँ, redemption value at par कितना है, बोलो। एट पार मतलब क्या? एट नॉमिनल वैल्यू, यानी ही रिडेम्पशन वैल्यू कितनी होगी? $100, करेक्ट। बट कमिंग टू व्हाट? कन्वर्टेबल वैल्यू, राइट। अभी का करंट शेयर प्राइस कितना है? करंट शेयर प्राइस कैसे निकालोगे? करंट शेयर प्राइस, यू हैव व्हाट, 80 मिलियन एंड यू हैव हाउ मेनी, 20 मिलियन, यानी करंट शेयर प्राइस कितना है? $4। एंड ग्रोथ रेट ऑफ शेयर प्राइस कितना है बॉस? 4%, 4%, करेक्ट। सो have a look, right? So your expected share price after 5 years, how will you find out? $4, right, will grow 1 plus 4% every year. How many times? Raised to 5। एक बार इधर ब्रैकेट डालनी पड़ेगी। So it will go to how much? 4.866, and number of shares कितने? Conversion is what? 20. So convertible value will be how much? 4.866 into 20, somewhere around 97.322, तो यू विल टेक रिडेम्पशन वैल्यू एनी डे। एक बार देखो बाबा, ये बराबर है क्या? 1.04, करेक्ट, या इधर 1.04 भी लिख सकते हो। 20 शेयर्स, तो इट विल बी व्हाट इज बेटर, यू विल टेक व्हाट, रिडेम्पशन वैल्यू, करेक्ट। अब ये हो गया रिडेम्पशन वैल्यू। आ जाओ, इसको थोड़ा नीचे कट पेस्ट कर देते हैं, बिकॉज उधर, आ जाओ। उसके बाद क्या करेंगे? टोटल नेट कैश फ्लो, करेक्ट, इट विल बी 100, राइट, हो गया। केडी 1 - टैक्स रेट इज इक्वल टू IRR, इज इक्वल टू IRR। हैव अ लुक, यहाँ से यहाँ तक कितना है, बोलो। 8.11, सो 8.11 इज योर केडी 1 - टैक्स रेट, ये रहा 8.11, करेक्ट। नाउ वेट इनटू कॉस्ट, करेक्ट, एंड देन गेट अ टोटल ऑफ दिस, करेक्ट। 9.62 का WACC आया। आया क्या रे सबका, बोलो, एवरीबॉडी क्या बोलता है?
मनन, गॉट इट? 9.62 समथिंग, यस सर। करेक्ट। सिर्फ देन 9.64 आया। ठीक है, वो दैट पॉइंट का ठीक है। डिस्कस द मार्केट वैल्यू इज प्रिफर टू बुक वैल्यू व्हेन मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। व्हाई मार्केट वैल्यू? बिकॉज मार्केट वैल्यू इज फॉरवर्ड लुकिंग, बुक वैल्यू इज व्हाट? हिस्टोरिकल कॉस्ट। दैट इज द रीजन market value is preferred. Market value denotes more the real figures and has what? Much more. We have discussed this, but ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये क्वेश्चन हमने किया है. But discuss three attraction to Banbury of convertible debt compared to a bank loan of a similar maturity as a source of finance. क्या है ये? Advantages of what? Debt. Advantages of debt. वो क्वेश्चन है ये. तीन एडवांटेजेस लिखने हैं, बराबर है क्या? कन्वर्टिबल डेट, वी हैव डिस्कस दिस, राइट? चलो आगे. कैलकुलेट इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट. इसमें क्या प्रॉब्लम है इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट पे, मनन? इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट इजी था, डिफिकल्ट था? बोलो. थोड़ा ट्रिकी था सर फर्स्ट टाइम के लिए। चलो आ जाओ. फर्स्ट टाइम के लिए मतलब? फर्स्ट टाइम जब रीड किया तब थोड़ा ट्रिकी लगा, सेकंड टाइम ओके. में थोड़ा इजी हो गया था। Gratrix company is a small, recently incorporated entity that is finding it difficult to raise funds to replace a machine that is essentially essential to its production process. The company has identified two machines of identical capacity but different technology which would be suitable. Only one machine would be purchased in the mutually exclusive investment decision. The machine would cost. ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दिया है ताकि आपको लगे कैपिटल राशनिंग का क्वेश्चन है, बराबर है क्या? मशीन वन, द मशीन वन वुड कॉस्ट 1 million एंड वुड नीड रिप्लेसिंग आफ्टर 3 years व्हेन इट्स रेसिडुअल वैल्यू वुड बी 100,000, करेक्ट? एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है, आफ्टर 3 years एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट expected to be 150,000 in the first year of operation, would increase by 5% per year in each subsequent year. Maintenance cost would be 32,000 per year in the first year of operation, increasing by 4% per year in each subsequent year. ठीक है. मशीन टू, इग्नोर टैक्सेशन बोला है, टेंशन ही नहीं तो और भी इजी है, बराबर है. आ जाओ, क्या करना है? कैलकुलेशन ऑफ क्या है? द इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट ऑफ 3 year and 4 year रिप्लेसमेंट इंटरवल्स ऑफ द टू मशीन, राइट? एडवाइस एंड में करेंगे, करेक्ट? हैव अ लुक. अब आप यहाँ पे काम काज कर सकते हो, ये राइट. चलो आ जाओ, राइट. तो सबसे पहले व्हाट? EAC ऑफ मशीन वन करते हैं, पर्टिकुलर्स 0, 1, 2 and 3, करेक्ट? 3 years है ना मशीन वन. फर्स्ट 3 year ऑप्शन, रेसिडुअल वैल्यू आफ्टर 3 year, ठीक है. सबसे पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट, करेक्ट. नाउ इफ यू आर पुटिंग अप ऑल इन नेगेटिव, पुट ऑल इन नेगेटिव. तो इफ यू वांट, राइट, हाँ, सबसे पहले ये भी डिसाइड करना पड़ेगा वेदर यू वुड यूज अमाउंट इन डॉलर्स और अमाउंट इन मिलियंस. मेरे को लगता है वी कैन यूज अमाउंट इन डॉलर, थाउजेंड्स और मिलियंस, दोनों में से कोई भी एक चलेगा. बट वंस इफ यू टेक दैट तो वो सब जगह यूज करना अमाउंट इन डॉलर्स ही ले लेता हूँ मैं, ठीक है. इधर ऐसा ही करना पड़ेगा, नो ऑप्शन, ठीक है. ठीक है, आ जाओ. इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 million, ठीक है ना, राइट. अब आई एम पुटिंग ऑल द कॉस्ट है तो कॉस्ट में नेगेटिव में डाल देता हूँ. स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू है अपने पास. स्क्रैप वैल्यू कितना है एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर? 100,000, राइट. चलो एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट इज हाउ मच, बोलो?
फर्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड 150,000, करेक्ट. इट विल कॉस्ट है तो वी विल डू व्हाट, नेगेटिव. This will increase into 1.05 every year. Correct. Annual operating cost. First year would increase by 5 and subsequent maintenance cost. Right. Maintenance cost is how much? Minus 32,000. Correct. Which will first year increasing by 4%. Why am I doing it from second year and not from first year? Tell me. Inflation फर्स्ट ईयर से है सेकेंड ईयर से? सेकेंड ईयर से इन्फ्लेशन. राइट. ये हो गया मशीन कॉस्ट. ठीक है. तो डेप्रिसिएशन का कुछ दिया है क्या? टीएस ऑन टीएडी ले सकते क्या? टैक्स शील्ड टैक्स ही नहीं दिया है. करेक्ट. तो ये मशीन वन हो गया. करेक्ट. टोटल कॉस्ट, नो अदर कॉस्ट. करेक्ट. देन वी डू व्हाट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट. राइट. तो वी डिस्काउंटिंग फैक्टर एट व्हाट रेट? देखो इधर नीचे दिया है 12%. करेक्ट. सो डिस्काउंटिंग फैक्टर एट 12%. वन. वी कैन यूज द डिस्काउंटिंग टेबल. आ जाओ जरा. इधर नीचे है 12%. डिस्काउंटिंग 0.893, 0.797, 0.712. आ जाओ. I will write here 0.893 first year, 0.797, 0.712. नेक्स्ट ईयर भी लिख के रखता हूँ. आई डोंट हैव टू गो अगेन बिकॉज नेक्स्ट ईयर 4 ईयर का है. टोटल कॉस्ट, डिस्काउंटेड कैश फ्लो और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ 3 year asset. This into this. राइट. आप करो ना भाई, फॉर्मूला से भी करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं तो जो भाई जैसे मैं पढ़ाता हूँ मैं वैसे करता हूँ. करेक्ट. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग द एसेट एवरी 3 years. करेक्ट. तो ये हो गया सम. करेक्ट. ये हो गया कॉस्ट. बट इसको क्या करना पड़ेगा? इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट निकालनी है. इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग द एसेट एवरी 3 years. करेक्ट. तो कैसा करेंगे बोलो? इट वुड बी, आई वुड हैव टू यूज द एन्युटी फैक्टर. तो मैं एन्युटी फैक्टर भी लगा देता हूँ. 12% कॉमा 3 years. करेक्ट. आ जाओ. 12% 3 years एन्युटी फैक्टर 2.402. 2.402 मैं इधर लिख दूंगा. 2.402 इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस. यानी पर ईयर कॉस्ट है 5769 वॉट एवर. अब देखो यहां आप ना टाइम सेव करते एग्जाम में. आ जाओ. ये पूरा है ना, मैं कॉपी करूंगा. करेक्ट. और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा. मशीन टू. आ जाओ. मशीन वुड कॉस्ट 1.25 मिलियन. 125, एक दो तीन चार. करेक्ट. स्क्रैप वैल्यू 150,000. करेक्ट. एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट विल बी 125,000 नेगेटिव एंड वुड इंक्रीज बाय 6%. तो अपना 5 की जगह 6%. करेक्ट. हैव अ लुक. फिर मेंटेनेंस कॉस्ट आर फोरकास्ट टू बी 42,000, नेगेटिव 42,000. करेक्ट. एंड देन विल इंक्रीज बाय 4% एवरी ईयर. ये 4% ही है ना? हाँ, बराबर है. राइट. फिर क्या है? इसकी टोटल ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है. 12% के 3 साल के रेट है. ये चौथे साल में भी है. सॉरी, यहाँ पे 4th ईयर में जाएगा ये. बराबर है. ये यहाँ इंटू 1.06 अप टू 4th ईयर ना.
4 ईयर, ठीक है। दिस इंटू 1.04, और ये कंट्रोल सी और ये कंट्रोल वी। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 4th ईयर का फैक्टर 0.636। दिस इज हाउ यू सेव टाइम इन एग्जाम। ये हो गया। इसी को आपको आगे कॉपी पेस्ट करना है, राइट। देख लो, फिर ये हो गया। खाली इधर आपको एन्युटी फैक्टर चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज इधर एन्युटी फैक्टर 4 ईयर का रिक्वायर्ड है। 4th ईयर का 3.037। करेक्ट। 12% कॉमा 4 ईयर्स, इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग एसेट एवरी 4 ईयर, एवरी 4 ईयर, पीवी ऑफ कॉस्ट ऑफ 4 ईयर एसेट। तो 5507, 550507। तो आई थिंक इधर 5769 है, इधर 5505 है। तो आई थिंक इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट is lowest or is lower in the 4 year replacement cycle, and hence the machine 2 will be selected. Correct. अभी इधर ना क्या मांगा है? Tell me what they have told you to do. Tell me. Give an advice also. Correct, no? Advice which machine to purchase. Advice दे दिया आपने. Correct. बराबर है. Next. Discuss replacement interval decision should be based upon and not present value. आप डिस्कस कर सकते हैं, वी हैव डिस्कस दिस, अच्छे से डिस्कस किया है। करेक्ट। तो यू कैन डू दैट। एंड पॉसिबल रिजल्ट्स ऑफ कैपिटल रैशनिंग एक्सपीरियंस बाय गिट्रिक्स एंड सजेस्ट 3 ways इन विच इट कैन बी ओवरकम। देख लो, कैपिटल रैशनिंग एक्सपीरियंस, पॉसिबल रीजंस ऑफ कैपिटल रैशनिंग, हार्ड कैपिटल रैशनिंग, एंड हाउ कैन इट ओवरकम इट। इजी क्वेश्चन है। विद दिस आई थिंक कंप्लीट हो गया। अरे, सबमिट नहीं होता है क्या रे? सबमिट का किधर बटन है रे? एंड एग्जाम। सर जैसे एग्जाम में टाइम ओवर हो गया और हम मतलब कर रहे थे उस टाइम पर, तो अपने आप तो सबमिट हो जाएगा वो? हाँ, वो अपने आप सबमिट हो जाता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो नहीं होगा मतलब कि सबमिट नहीं हुआ या कोई दिक्कत आ गई नहीं उसमें? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता, हो जाता है सबमिट। ठीक है, ये रहा अपना आंसर। कुछ है क्या लफड़ा? मार्किंग, आ जाओ जरा। सैंपल आंसर देख लेते हैं। हाँ, बराबर है। 9 पॉइंट, टोटल मार्केट वैल्यू WCC 9.62, परफेक्ट आया ना अपना 9.62। कोई टेंशन नहीं। ठीक है। मार्किंग भी दिया हुआ इधर, कैसे देना है मार्क्स। 32। आप एक बार थियरी तो आई थिंक आप रीड कर लोगे, राइट। 34 पे चलो। सही है क्या अपना सजेस्टेड आंसर के साथ? देख लो भाई, सही है क्या? 5 NPV 576918 अपना ऑलमोस्ट सिमिलर है। और इनका कितना है? 550। नहीं, 560 कैसे आया? एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? तो भी एनी विच और अपना कंडीशन तो सही है। 47 to 44। बराबर है। 47 to 44, 1488, 150। तो आई थिंक थोड़ा बहुत 12% के फैक्टर में कुछ लफड़ा हुआ होगा। ठीक है, वो भी ओके है। 12%, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ सकता है।
दैट इज अलाउड। 3.037 सब कुछ तो सही है अपना, वैसे कुछ प्रॉब्लम है नहीं। थोड़ा सा ऊपर नीचे है, बट ये 560 149 नहीं, 550 आ रहा है ना अपना। 1671 नहीं, 1701 आ रहा है, कुछ लफड़ा है क्या? 125 132 500, ये सही है ना रे? 140 450 148 47224, सारा कुछ सही है। ठीक है। क्या गड़बड़ है? 125 451। नहीं, मैं एक्सेल में करवाता हूँ, जो आपको एक्सेल शेयर किया ना, फिर एक्सेल शेयर करता हूँ बच्चों के साथ, राइट? ताकि आपके पास वो हमेशा रहे। ठीक है। इसमें कुछ कुछ किधर कुछ लफड़ा मेरे को मालूम नहीं क्या है, राइट? बट एट द एंड अपना क्या है, कौन सा मशीन टू शुड बी परचेस्ड इज ओके। आई थिंक विद दिस आपको जो डिस्कस करना था मेरे को, वो डिस्कस हो चुका है। और कुछ बचता है क्या मेरे साइड से? आज ही हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा दूं क्या? लिख दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आ जाओ आज के The सेशन में। हाँ, for बोल। the EAS question, oh sorry, EAC question, the theory one. So we can write the advantages of it, right? In theory. एडवांटेज नहीं मैडम, देयर इज अ क्वेश्चन विच सेज व्हाई एनपीवी इज नॉट यूज्ड एंड ईएसी इज यूज्ड। एक क्वेश्चन है एग्जाम किट में, विच फोकसेस ऑन दैट टू machines which have differing lives cannot be compared with each other, right? NPV में वो एक disadvantage है, right? First you have to start with that there is a disadvantage of NPV, correct? That two machines with differing lives cannot be compared, right? Hence you do what? You have to look at EAC and then write the process of EAC के पहले आपको present value निकालना है, then you have to divide it by the what? Annuity, and then it gives you what? Tell me. Equivalent annual cost, which then can be compared, because this is every year ka, and there is an assumption that this 3 year का system will happen again and again and again. हमारे बुक में है वो, अगर आप देखें तो EAC में, करेक्ट? तो दैट शुड नॉट बी एन इशू। अब देखो एक बार। सर आप जैसे पढ़ाते हो अपनी आपकी अलग बुक है? मैं कोई बुक से नहीं पढ़ाता हूँ, मेरे नोट्स पूरे रहते हैं। मैं कभी कोई कैपलान या कोई बुक यूज ही नहीं करता सर। मैं आपको देखा क्या, मेरे पूरे नोट्स सारे कवर्ड है, सब कुछ। क्वेश्चंस आप कहीं से भी करो, मेरे नोट्स के साथ आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हो कभी भी। ये अपना गारंटी है। एफएम हो गया, एएफएम हो गया, यूके टैक्स हो गया। हाँ बोलो देव, व्हाट हैपेंड? सर आप क्या क्या पढ़ाते हो सब्जेक्ट्स? सर हमारे यहाँ तो ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स है। मैं नहीं पढ़ाता आप। हूँ यूके टैक्स पढ़ाता हूँ, पीएम पढ़ाता हूँ, एफएम पढ़ाता हूँ, एएफएम पढ़ाता हूँ, एटीएक्स पढ़ाता हूँ, एमए पढ़ाता हूँ। तो अगर आपको आगे पीएम या ऐसा कोई, और हाँ हमारे पास फैकल्टी जो मेरे जैसा ही पढ़ाती है, वो एफआर पढ़ाती है, एसबीआर पढ़ाती है। अब हम लोग डबल ए ट्रिपल ए भी चालू कर रहे हैं, स्लोली स्लोली। अपना लॉजिक बहुत क्लियर है। अगर फैकल्टी है, बेस्ट फैकल्टी होगी, तो ही अपन वो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। हमारे पास डबल ए के लिए अच्छी फैकल्टी नहीं थी, एक दो फैकल्टीज को ट्राई किया, बट मजा नहीं आया। हमारा ऐसा है कि अगर आप हमारा रिवीजन क्लास भी बैठ के जाओगे ना, एएफएम में ऐसा हुआ है पिछले बैच में कि रिवीजन बैच देख के भी लोग पास हुए। 10 घंटे में नोट्स मिलते, ये मिलता वो मिलता, उसमें पास हो जाते। हाँ देव बोलो। सर इसमें मिनरल और वो जो एमएमएम थ्योरी है उसके हाँ, assumptions वगैरह याद करने एम पड़ेंगे एंड क्या? एम अलग है भाई। एम एंड एम अलग। तुम मिलर और बोल रहे हो या एम एंड एम बोल रहे हो? पहले ये नहीं बोलो। सर, एमएनएम। एम एंड एम, हाँ। सर उसके जो assumptions है वो याद करके जाना जरूरी है क्या? वो क्योंकि वो एक या दो जगह पे आए हुए हैं, मैंने जनरली कवर करता क्लास में, राइट? एम एंड एम की जो ये उसका एक ही एमसीक्यू है पूरे सिलेबस में, जितना मुझे याद है। तो सर वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना सेक्शन सी उतना या फिर इम्पोर्टेंट नहीं, के लिए? सेक्शन सी में वो नहीं आता है। यस। आपको तो मैं तो एफएम पढ़ाता हूँ, पीएम पढ़ाता हूँ, यूके टैक्स पढ़ाता हूँ। अभी यूके टैक्स का भी चल रहा है, मॉर्निंग में यूके टैक्स रिवीजन है, अभी एफएम है, शाम को अभी एएफएम होगा, करेक्ट? सर आप जैसे आपने मतलब टोटल सिलेबस कब कवर करवा दिया था एग्जाम से? 8 तारीख तक मेरा ऑलमोस्ट विदाउट थियोरी सारा कुछ खत्म हो गया था, राइट? और फिर जो थियोरी बची थी थोड़ी बहुत, वो एंड में मैंने आई थिंक सर 12-13 तारीख को खत्म किया क्लास, आई थिंक 11-12 तारीख को। 11 तारीख मतलब महीने भर, 25 दिन पहले हो जाता है एग्जाम का पूरा पोर्शन। और पूरा लिखा के होता है सर, ऐसा नहीं कि ये सब मैं लिखाता हूँ क्लास में, ये जो आप सब देख रहे हो ना,
एवरीथिंग आई हैव गिवन इन राइटिंग इन क्लास। सारे एक्सेल में क्वेश्चंस, आप जो ये एक्सेल देख रहे हो ये सारा बैठ के हमने खुद सॉल्व किया है क्लास में। ऐसा भी नहीं है कि हमने कुछ ऐसे छोड़ा है, सारी चीजें इतने सारे आप एक्सेल में क्वेश्चंस देख रहे हो, सारे क्वेश्चंस मैंने क्लास में सॉल्व किए। और ये क्लास कब शुरू की थी आपने? क्लास शुरू की थी सर एक हफ्ते बाद एग्जाम। एग्जाम होती है अभी, हमारा अगला बैच शुरू होगा बेटा दिसंबर यानी में। 12 या 13 सितंबर को आपने शुरू किए होगे ना? हाँ 16 नहीं 16, उस टाइम पे तो थोड़ा लेट किया था। मतलब सितंबर में आई थिंक हम लोगों ने 17 सितंबर को शुरू किया था। 16 या 17 सितंबर, ट्यूसडे या वेनसडे को। वीकडे बैच होती है ना, वीकेंड की बैच संडे को शुरू होती है, वीकडे की ट्यूसडे नहीं तो वेनसडे को शुरू होती है। कितने दिन होती है वीकडेज में? वीकडेज में 5 डेज इन अ वीक, 4 या 5 डेज, मंडे टू थर्सडे, मंडे टू फ्राइडे। टाइम क्या है? इवनिंग 6:30 to 9:30 FM। और पीएम अगर होगा तो फिर वो दिन में होता है, मॉर्निंग में होगा या तो फिर दोपहर में होगा। ये बार एटीएक्स और एएफएम और 3 सब्जेक्ट ये रन होंगे। अभी तक डिसाइड नहीं किया है, शायद एग्जाम हो जाए तब तक डिसाइड हो जाएगा। ऐसा है, पीएम का रिकॉर्डिंग अपने पास है, रिकॉर्डिंग भी अपना सारा है, राइट। तो अपना क्लास, लाइव क्लास के साथ 2 रिकॉर्डिंग्स भी मिलती, 2 बार देख सके वैसा रिकॉर्डिंग भी मिलता है आपको। तो आप पूरी तरह से कवर्ड है, इनकेस मिस हो गया क्लास तो रिकॉर्डिंग्स भी आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा है। हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो भाई। करेक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नहीं नहीं रुको रुको, किधर लिखे थे भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? रुको रुको रुको, ये रहा फैमिली रिवीजन, ये इधर। हाँ भाई, कहाँ लिखा था रे मैंने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ लिखे थे? ये इधर, इधर ऐड करता हूँ। ठीक है, मेरे को खाली देखने दो, नाम मेरे को तो सारे वैसे याद है। लिख लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन सी टाइप क्वेश्चन, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। केएक्सपी कंपनी लिख लो एक, केएक्सपी कंपनी। फिर एफएलजी भी लिख लो। फिर एनजो कर सकते हो आप, एनजो कंपनी। फिर फ्लिट कंपनी तो 100% करना चाहिए। फिर ऑस्कर कंपनी, डस्टी और पूमाइस भी करना चाहिए। और लास्ट अभी जो रिसेंटली आया था, परडी था ना, परडी, या अरे नहीं रे, कौन सा क्वेश्चन था जब मैंने करवाया था रिसेंटली? परडी था आई थिंक, परडी, PURDY। ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के क्वेश्चन नहीं करने हैं। हाँ मैं पहले बोल रहा हूँ, मैं तो बोलोगे चिन्मय सर ने बोला इतना करके जाने का तो हम इतना करके जाने वाले हैं। पहले ही बोल रहा हूँ, हाँ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। एक वो मैंने रिसेंटली एक क्वेश्चन था जीप, ऐसे गुलेरमो या कुछ ऐसा क्वेश्चन था क्या? गुलेरमो, ऐसा कोई क्वेश्चन है क्या? मेरे को ऐसा क्यों याद आ रहा है मैंने किया है गुलेरमो। हाँ सर, है तो। है ना, तो वो भी लिख लो, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। GUILLERMO, मेरे को स्पेलिंग मालूम नहीं है उसका, गुलेरमो लिखा है या गुलेरमो लिखा है, किधर है लेकिन गुलेरमो मेरे को दिख नहीं रहा है। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हाँ है। रुको 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 रुको, नहीं 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 नहीं, रुको, वही वही लफड़ा हो गया, रुको। हाँ पुलोरो, हाँ गुलेरमो, GUILLERMO, बराबर लिखा मैंने स्पेलिंग, GUILLERMO, गुलेरमो कंपनी। अच्छा क्वेश्चन है, राइट। सेक्शन सी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाओ, वर्किंग कैपिटल के, लिख लो। राइट, सबसे पहले ओवर ट्रेडिंग, करेक्ट। उसके बाद वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। फिर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, फाइनेंसिंग स्ट्रेटजी, करेक्ट।
फिर वर्किंग कैपिटल, और क्या था रे भाई, 3 reasons ऑफ कैश, यूजिंग कैश, ऑफ यूजिंग कैश। ठीक है, 3 reasons फॉर यूजिंग कैश। और क्या था भाई तुमको? हाँ, एक है इम्पोर्टेंट, एक है बैलेंस इन वर्किंग कैपिटल कंपोनेंट्स। फिर अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल पॉलिसी कंपोनेंट्स, करेक्ट। एक और क्या था भाई, फैक्टरिंग, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फैक्टरिंग, बराबर है क्या, एक फैक्टरिंग हो गया। उसके बाद और क्या था भाई, JIT, 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 जस्ट इन टाइम, ऑल 3 क्वेश्चंस, जस्ट इन टाइम, करेक्ट। और क्या है भाई, कैश एंड कैश रिसीवेबल में और कोई क्वेश्चन है क्या? आई थिंक इसमें तो कोई और थियोरी क्वेश्चन तो नहीं है। इन्वेंट्री में JIT है, बस आई थिंक इसमें से इतना ही थियोरी इंपॉर्टेंट है जितना मुझे याद है। ओवर ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग, ठीक है। विद दिस आई थिंक आपका वर्किंग कैपिटल, राइट, वो भी कवर हो गया। ठीक है, आई थिंक देन वी कैन रैप इट अप फॉर टुडे, राइट। हाँ, नेसुड कंपनी इंपॉर्टेंट है क्या? नेसुड कंपनी कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। जी सर। गोरवा कंपनी भी कर सकते हो। सर अभी। गोरवा कंपनी मैंने डाला है ना, आपके पास नहीं है क्या गोरवा कंपनी? मेरे नोट्स में है गोरवा कंपनी, आप देख लेना, सेजल। और सर क्योंकि अभी टाइम कम है तो सेक्शन बी में ना इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। स्टडी अब तो तो प्रैक्टिस। रिस्क मैनेजमेंट और फॉरेक्स रिस्क मैनेजमेंट और इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट पे फोकस करो, उसी पे से 1 या 2 सेक्शन भी क्वेश्चन निकल के आएंगे। देखो मेरा लॉजिक बहुत सिंपल है, आप सेक्शन सी एकदम अच्छे से तैयार करके जाओ, सेक्शन बी अच्छे से तैयार करके जाओ, बिकॉज ए की अनप्रडिक्टेबिलिटी बहुत हाई है। तो सी और बी अगर अच्छा रहेगा तो आप निकल सकते हो एग्जाम में इजीली। सर ओवर द पीरियड एक चीज ये भी है कि मतलब जब होता है कि दो भाई तू सेक्शन। तो कब से दे रहा है ना। हाँ सर, मेरा दूसरी बार। हाँ, हाँ, तो सर वही है कि एक एक सेक्शन बहुत हार्ड आता है, बाकी दो सेक्शन तो निकल जाते हैं, एक ऐसा सेक्शन। कुछ नहीं रहता सर। देखो मेरा ऐसा मानना है कि इजी वाला पार्ट आता है एग्जाम में, राइट, बट आप डिफिकल्ट में इतना घुस जाते हो। EAC बहुत इजी है, कितना इजी था अभी, बहुत इजी। बट आपका फोकस क्या होता है मालूम है क्या? आप डिफिकल्ट डिफिकल्ट पार्ट, आप वो फुल फ्लेज एनपीवी पे फोकस करते हैं। मैं 1000 बार बोल चुका हूँ क्लास में, राइट, कि फुल फ्लेज एनपीवी का क्वेश्चन आया, 2 सेट रहते हैं, एक में फुल फ्लेज एनपीवी रहता, सेकंड में क्या रहता, अदर रहता। और EAC, लीज वर्सेस बाय, और यही सारे क्वेश्चन, कैपिटल रैशनिंग, वहीं पे जा रहा है एग्जामिनर, राइट। तो आप क्या करते हैं, खाली फुल फ्लेज एनपी पे फोकस रखते हैं, EAC पे फोकस नहीं रहता आपका, कोई चीज पे फोकस नहीं रहता। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपका फोकस रहेगा तो आप पूरे सिलेबस को क्या करो, एक एक तरह से उसको ट्रीट करो, ना कि उसको पार्ट्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये बहुत अच्छा करके जाते हैं, ये अभी तक बहुत कम क्वेश्चन आए तो इसको करेंगे नहीं। ऐसा अगर आप करोगे तो 100% रेसिपी फॉर फेलियर है, मेरा मान लो। तब जाके आपको लगता है सेक्शन सी हार्ड है, ये डिफिकल्ट है, ये इजी है, क्योंकि आपने क्या किया, यू हैव नॉट गिवन इंपॉर्टेंस टू एवरी सेक्शन, राइट। अब मैंने आज आपके 2 थियोरी चैप्टर लिए, वो 2 थियोरी चैप्टर में से देर आर 10 12 12 MCQs, 15 MCQs आते हैं, उसमें से एक MCQ सेक्शन ए में आ गया, बट आपने वो सही से किया ही नहीं है, खाली ऊपर ऊपर से देख लिया तो नहीं होगा वो। ऊपर ऊपर से देखा तो होने नहीं वाला है, राइट। आपको पूरा डिटेल में जाना पड़ेगा, राइट। ऐसे ही नहीं हमको, राइट, पिछले अटेम्प्ट में AFM में हमको क्या आया, इंडिया रैंक 3 आया, उसके पहले FM को ग्लोबल रैंक आया है, ग्लोबल रैंक 1 है FM में, अपनी स्टूडेंट है जो भी पढ़ाती हुई है हमारे साथ, करेक्ट। तो मैं आपको वही बोलूंगा कि FM में मल्टीपल 70+ स्कोर, 80+ स्कोर आए, राइट। तो मैं आपको सिंपल एंड स्वीट वही बोलूंगा कि आप क्या करो, टेल मी, फोकस करो अंडरस्टैंडिंग पे, फोकस करो प्रैक्टिस पे, मोर एंड मोर MCQs, मोर एंड मोर सेक्शन सी क्वेश्चन, राइट। करो ना, शायद कोई प्रॉब्लम नहीं। आज खाली मेरा 9 बजे तक क्लास है, 9 बजे के बाद करो।
कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ओके गाइस, गोरवा कंपनी सेजल आपको नोट्स में मिल जाएगा, राइट। Okay, sir. बाय बाय। आज सारे अभी वर्किंग कैपिटल के सारे क्वेश्चन लगा लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ बाकी के ए और बी के सारे क्वेश्चन, राइट। आज रात को नींद सोया नहीं चलेगा, लेकिन सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर दोगे तो कल वी कैन कंप्लीट व्हाट, जो पार्ट अभी बचा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और परसों फिर क्या है, रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलो देन गाइस, बाय बाय, वी विल मीट अप कप टुमारो फॉर 2 PM। टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बाय बाय। Thank थैंक यू you. सर।